Hello. Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Wonderful. I'm sure you had some great fun yesterday. Yes. Chalo, let's get back to work now. Let's start doing. So, friends, we were discussing some interesting sections yesterday, and I'm sure yesterday we got some good clarity in terms of how do we calculate tax, especially in case where there is a casual income covered under section 115 BB. 115 BB talks about what? Winnings from betting, gambling, lottery, puzzles, games, not sports, games, tax at what rate? Flat rate of 30%. Very good. Come on, my dear friends. What are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, comptroller and auditor general. What are the 5 sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. Judicial pronouncements means rulings of High Court or Supreme Court. Annual Finance Act, which year? Wonderful, every year. And for us, which year is applicable? 2022. Why? Because we are writing exam and we will pass in 23 only. Yeah, we are writing exam and we will pass in 23 only. Correct, no friends? I want all of you to learn budget 23 only and only for knowledge. Make sense? Yes. Everybody clear? Good. Does income tax apply to Jammu and Kashmir? Does it apply to Prestige Point? Wonderful, yes, everywhere. And it applies to whole of India, including Jammu and Kashmir. Is the word India defined? Yes. Which section defines India? 225A. India includes what? Territory, territorial waters, seabed, subsoil, underlying such water, continental shelf, and exclusive economic zone. Airspace about territory and territorial waters. Clear है बेटा सबको? समझ में आ रहा है बात? चलो बेटा, very very important section of income tax. No doubt about it. Section 4 बोलो. Chargeability section. क्या बोलता है section 4? Income earned by an assessee during the previous year
shall be chargeable to tax. One more time, please. Income earned by an assessee during the previous year shall be chargeable to tax in assessment year. This is what section? Section 4. Title? The fundamental chargeability section of income tax. Very, very important. That only clearly has given that whatever income you are in previous year is chargeable to tax in assessment year. Previous year defined by which section? 234 and section? Previous year is the year in which income is assessment year. 29. Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. याद है ना बेटा? दोस्तों बोलो. Which section defined India? What is section 27? Assessee. 231. Is every assessee a person? अच्छा मतलब ऐसा देखिएगा तो नो सर नो सर नो सर यस सर यस सर यस सर अरे मेरे रिएक्शन में थोड़ी आपका आंसर चेंज हो गया यार इज एवरी assessee a person is every person an assessee exactly because every person need not be liable to pay tax. Do we have any basic exemption limit? Exam type question has come for multiple choice. I told you 30 marks we have got MCQs. Yes, that means 18 marks is MCQ for income tax. Some are telling how sir? Are kitne marks hai bhai? 60 marks na? 60-30% is how much? 18 marks. One time MCQ question came in exam where they asked a small question. What is it we're talking about shit? Basic exemption limit. They asked what is the basic exemption limit for individual. Student thought, ये basic exemption limit क्या होता? अरे वही भाई 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख. 2.5 लाख किसका है? 3 लाख, 5 lakhs. And normal category also applies to. यार इतना बोला यार आप एक वर्ड में ऐसा फेंक रहे क्या यार? HUF, AOP, BOI, AJP and non-resident individual irrespective of age. Yes. इतना बोला आप इतना बोलते नॉन रेजिडेंट ले लो क्या है यार ये वापस बोलो बोलो तुमने कुछ नहीं होता बोलो वापस बोलो नॉर्मल कैटेगरी अप्लाइज टू हुम HUF, AOP, BOI, AJP and non-resident individual irrespective of age. So if a fellow is a non-resident, even though his age is more than 60 years, more than 80 years, 120 years old, still 2.5 lakhs nil. Barabar hai na beta? Everybody clear with this context, my dear friends? Got a full clarity, sir? Brilliant. Now, my dear friends, what is section 4 title? Did we learn some exceptions to section 4? Just tell section numbers for this. Brilliant. Excellent. Come on. Tell me guys, what is section 172? Shipping business of non-resident. What is the presumptive income there? 7.5% of the freight. We discussed that logical point, no? Because that fellow is going out of India. Suddenly उसका हाथ पकड़ के बोले भाई tax pay कर. अरे भाई अभी journal ledger का time नहीं है. We want tax to be collected first. So what they told in the law, 7.5% is deemed to be income. In exam, one fellow wrote the answer. 7.5% is the tax payable. November will become May. Come on, 172 is what? Shipping business of non-resident. 174. Persons leaving India permanently or for long time. 174A. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. 176. Wonderful. Green color looks interesting. 172. 176. Person is not living. You leave that answer. Discontinued business. 174A. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Next. 288A. 288B. How do we round off? To the nearest multiple of 10. Barabar hai na? Good. 174. Those. Person leaving India permanently or for long time. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. Persons likely to transfer property to avoid. We cannot forget that word avoid. So many times we heard in movies. So many times we used in Insta reels. So
Remember that. Persons likely to transfer property to avoid tax. Clear with that, everybody? Sure, guys. Last 1-2 questions, then we'll start. What is section 87E? Rebate for whom? अरे पूरा बोलो बेटा please. Resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. How much is the rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. I told logic why it was. Come on, one more last time. Rebate is applicable to whom? क्या बोला दोस्त? नॉन रेजिडेंट बोला कोई तो इधर ऐसा नॉन सुनाई दिया मुझे बटर नॉन ऐसा कुछ सुनाई दिया आप ही बोले ना बोलो applicable to whom? Resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs. How much is the rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. And basic logical common sense, non-resident cannot claim rebate. Number 2, there is no logic of rebate for a super senior citizen because for him up to 5 lakh tax is 0. I think we are fully clear with this. Everybody, are we ready to learn some special points today, which are extremely powerful? Super duper points I'll tell, which we'll go crazy with. Ready? Let's. Chalo beta. Listen carefully now. Nothing to write. In my class, don't write while I am writing. I'll give you time to write. Okay? Because subject like tax, if you write while I am writing, flow will go. So just listen when I'm teaching you. Then I'll give time to write. Section 14 क्या है बेटा by the way? Heads of income. कितना heads of income है उसमें? 5. We know that there is salary, HP, PGBP, capital gains, other sources. All 5 heads of income combined together, what do we get? Gross total income. From that, what we reduce? Deductions, which are given by chapter. Then balance is called total income. Ultimately, we will calculate tax on total income only. बेटा बराबर है? और deduction दो तरीका है. Deduction based on payments made. Deductions based on एक example दो ना payments made का. Tuition fees, life insurance, necklace to wife, no. Medical expense, बराबर है ना बेटा? Income एंड का दो सेक्शन पढ़ा है बेटा आपको मैंने ऑलरेडी कल. 80 TTA TTB. TTA किसको है? Don't tell normal other than senior citizen. TTB senior citizen because in act only they use the word non-senior citizen. So let's not tell the word normal. Okay? TTA is for what? Non-senior citizen. Interest on what account? Sir, savings bank में current account में फर्क है ना बेटा? क्या फर्क है? Current मतलब current है. हाँ. Current business purpose. Savings? Savings purpose. Wow. Do we get interest in current account? Exactly. We don't get interest. We get interest only in savings bank account. Some banks, what they started doing nowadays is that if current account more balance is there, they are transferring temporarily to savings bank and giving interest. Again, bring it back to current account. They gave that facility. Technically, they are calling it as sweep in, sweep out. Like that, they are doing some banks so that they'll give some interest. ठीक है ना बेटा? FD पे इंटरेस्ट आता है क्या? FD कवर्ड है क्या? TTA में? TTB में कवर्ड है क्या? TTB किसके लिए? Senior citizen. It is for whom? Senior citizen. For interest on what? Savings bank account. And interest on FD. कितना है बेटा deduction? 50,000. Interest on 50,000, whichever is lower. TTA का? Interest on 10,000, whichever is lower. बेटा बराबर है? सबको यहाँ तक clear है बेटा? Everybody, friends? So let's say, for example, my dear friends, let's calculate some question. Okay? First, then I'll start the new concept. Okay? One person, Mr. A, listen carefully. First, don't write anything. He is aged 45 years. He is aged what, beta? He is aged 45 years. And income from salaries, let us say 6 lakhs. Bracket. Sir, it दिख रहा है क्या? Yes. Just give me 1 minute. Please wait, patience नहीं है अभी.
अरे I'll start writing from here. Mr. X, एज कितना बोले इसका? Mr. X, age 45 years and he has got following incomes, my dear friends. अच्छा ये डिजाइन बदल गया क्या? अपडेट हो गया इतना जल्दी? ठीक है. Income from salaries. Let us say 6 lakh rupees. TD has done 1 lakh. समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब कितना इनकम आया उसका एक्चुअली? मतलब एक्चुअली उसका सैलरी कितना है? नो दोस्त, व्हेन आई राइट 6 लाख ब्रैकेट TD has done 1 लाख, उसका मतलब है उसका सैलरी 6 लाख रुपए है, पर उसको 1 लाख काट के दिए 5 लाख, पर आप बोलेंगे कि इनकम 5 लाख है? I repeat once again, my dear friends. Let us say expert is paying Shiva Teja 10 lakh rupees. They deducted 1 lakh and paid me only 9 lakh. Will I say my income is only 9 lakhs? My income is still 10 only, no? Whatever TDS is deducted, it is still my income only, no, sir? Beta, bolo beta. Whatever tax they have deducted at source, that is still my income. Yes, sir. But it is as good as some tax which they paid to government on my behalf. That is why it is called tax deducted at source. So logic is beta. Source. Where is the source of income for me? Expert. In my example, at source they have deducted. What they deducted? Tax at some percentage. Which percentage? What? We'll go to TDS chapter because we're still in first chapter. Are we clear, beta? But first chapter is one of the most important chapter because there only you will get the complete base and the roots of this topic. Topic means income tax topic. Means entire going forward will depend upon these roots. That's why I'm taking so much time for basics. Getting clarity because आप खुद समझ गए अभी तक कितना सेक्शन पढ़े हम लोग, इतना डेप्थ है इसमें. क्लियर है बेटा? समझ गए आप लोग? आप मुझे बोलो इस केस में सैलरी कितना है इसका? जब भी मैं लिख रहा हूं 6 लाख, ये बात सोचो कि 7 लाख है, 1 लाख कटने के बाद 6 लाख आया. 6 lakhs is net figure. That is not the net point. We are talking about 6 lakhs income. TDS deducted is 1 lakh. उसके हाथ में 5 लाख आया होगा, but उसका इनकम तो 6 लाख है ना बेटा? Yes. बेटा बोलो. Yes. Everybody clear? Yes. I think you understand what we are trying to do. Yesterday at the end of the class, we solved one question where 80 TTA was there. That example we have done, correct? No? I think my name only I wrote there. Now I'm giving an example where I'll combine everything and I'll also give TDS concept. Then how do we solve? समझ रहे? Yes. Right. Income from salary 6 lakhs. Then income from what beta? House property. Let us say 3 lakh. Then PGVP. Let us say 15 lakhs. TDS 1.5 lakh. मतलब उसका 16.5 lakhs है क्या उसका? बोलो बेटा. 15 lakhs. समझ गए ना? Exactly. Next. Capital gains 0. Somebody is telling वो भी लिखो ना सर. कैपिटल का टैक्स रेट अभी तक सीखे नहीं हम लोग, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा. After this, immediately I'll start with you. What is the tax rate for capital gains? Then we will solve one problem today which has got everything. Are we clear? Yes. Right. Income from other sources. What he has got is interest on savings bank account 12,000. ठीक है? Next. Gift from friend. हर एक friend काम ही नहीं होता. Okay. Gift from friend 65,000. Is that gift taxable? बोलो. I already told you. Gifts if they are more than, then they are definitely taxable. बराबर है ना बेटा? Speak out, my dear friends. Brilliant. Next. What he has done is, Mr. X, let me write here. He paid life insurance 1.8 lakhs. 1.8 lakhs. ठीक है ना बेटा? And he also paid medical insurance of 40,000. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग? Yes, sir.
I hope the question is very clear. Just check all the numbers once. Come on. Salary कितना इनकम है इसका? TDS कितना गया? 1 लाख. हाउस प्रॉपर्टी कितना है? TDS कुछ नहीं है. PGP कितना है? 15 लाख. TDS कितना गया? 1.5 लाख. कैपिटल गेन 0 है. उसके बारे में बाद में बात करते हैं. Today end of the day we will solve that questions on capital gains. Don't worry. Next. Other source में क्या क्या है? Interest on savings bank 12,000. Gift from friend 65,000. And let us say एक और ऐड करते इधर. लॉटरी इनकम 1 लाख. TDS 30,000. 30%. समझ गया लॉजिक इसका? देखो सीधा आपके पास आंसर आ गया 30% TDS का. ठीक है बेटा, नंबर्स पूरा क्लियर है? Shall we start solving now? How do we solve a question like this where we want to compute tax liability? Compute what बेटा? Tax liability. चलो निकालते हैं. What is his age first of all? 45. 45 comes under which category? 45 definitely comes under normal category. Correct? First, out of total income, first let's calculate what is this gross total income. Take deductions, total income, then calculate tax. Yes. बराबर है ना बेटा? चल, first column क्या है? Income from कितना है salaries figure? 6 लाख. Salary is 6 lakhs. Income from कितना बेटा? बराबर है ना? Profits and gains from business or profession कितना है? Capital gains. Income from other sources कितना है? पूरा ऐड करके बोलो. 12,000 plus 65,000 plus 1 lakh. एक काम करते हैं. Let's write. क्या क्या है उसमें बोलो. One minute. Interest on savings bank account कितना है? 12,000. Next. Gift कितना है? Next. Lottery कितना है? 1 lakh. बेटा आपको एक बात बोलता हूं अभी, याद रख लो बेटा. I'm giving one concept to you with this particular question. That is, this gift, it is taxable since it is greater than 50,000. समझ में आ रहा है बेटा? And this concept is given by section 56 to 10. There is no place there. That's why I'm writing there. I hope you are clear, everybody. But when you write, don't write like that. जहाँ पे जगह अच्छे से लिखो आप. ठीक है ना बेटा? Gift is taxable under which section? 56 to 10. But you don't tell your parents that मम्मी आप 50,000 के ऊपर गिफ्ट दे तो मुझे टैक्स लगेगा. मत बोलो. There are some cases where gift is not taxable. Example, gift received from relatives. Who is relative? We will talk in detail separately. And after I teach you that concept, if somebody is coming to your home, first you will check ये relative में आएगा क्या? आएगा तो अंदर आने देंगे, वरना इसको बाहर से देंगे. Is that clear, everybody? Done. Come on, tell me what's the total of this? 1 lakh. That's it. So समझ गए ना presentation? Total, what do we call it? What do we call it? Gross total income. कितना बेटा? 25 lakh 77,000 is my gross total income. Less deduction under chapter. Exactly. 6 is what 6? Roman 6. Exactly. Deduction under chapter 6A. बेटा बराबर है? I think presentation is clear for all of us. बोलो deductions में क्या क्या है? उन्होंने क्या पे किया? एक तो लाइफ इंश्योरेंस पे किया, दूसरा क्या पे किया? मेडिकल इंश्योरेंस. Friends, let me tell you, life insurance is covered under 80C. And all points under 80C put together, the maximum limit is only 1.5 lakhs. कल कोई पूछे थे मेरे से क्लास के बाद भी इस बारे में. सर क्लियर है? 80C का लिमिट है 1.5 लाख. पूरा डिडक्शंस का लिमिट 1.5 लाख नहीं है बेटा. 80C का लिमिट है 1.5 लाख. अब आप पूछोगे वापस मेरे से, सर 80C में कितने कितने पॉइंट्स है? 15-20 पॉइंट है. वो 15-20 पॉइंट पूरा मिलके 1.5 लाख. जब टाइम आएगा तब पढ़ते क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या कवर नहीं है. बट मेजर पॉइंट्स क्या है वो बीच बीच में आ जाएगा टॉपिक्स में. क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी?
नेक्स्ट और क्या पे किया इसने? नाउ लेट मी ऐड मोर नॉलेज टू यू. 80D डील्स विद मेडिकल इंश्योरेंस. 80C में क्या कवर्ड है बेटा? अबे सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, आई लास्ट डिफरेंट वे. लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड इन विच सेक्शन? फर्क समझ गया ना मेरा स्टेटमेंट का? Because if I say 80C covers life insurance, that is wrong. Because 80C covers lot of points. उसमें लाइफ इंश्योरेंस एक पॉइंट है, बट लाइफ इंश्योरेंस कहां पे कवर्ड है? 80C. मेडिकल इंश्योरेंस कहां पे कवर्ड है? ये 22 आपने कितना पे किया? 40,000. But the maximum limit for medical insurance deduction is only 25,000. For senior citizen, it is 50,000. Some student is asking, सर आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे? दोनों भी हो रहा मेरे भाई. Friends, are we understanding everybody? So speak out. Both will write the points, don't worry. Sir, focus my dear friends, are we clear? Life insurance is covered in which section? 80C. 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1.5 लाख. मेडिकल इंश्योरेंस कहां पे कवर्ड है? 80D. मेडिकल इंश्योरेंस का लिमिट कितना है? 25,000. सीनियर है तो एग्जैक्टली समझ में आ रहा ना बेटा? Sir, life insurance, medical insurance is the most common thing what people take. So those kind of common things, I cannot tell you, I'll teach you later. You have to learn now. That's why I'm teaching now. Are we clear? Everybody, sir. Life में medical में फर्क तो पता है ना आपको? कोई तो बोलो फर्क क्या है? Medical expenses के लिए medical insurance, life insurance is basically. Yes. कवर करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस रहता, और जब लाइफ डेथ की सिचुएशन रहती है इंसान मरता है. अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस आदमी मरे तो ही पैसा आएगा क्या? ठीक है. सो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, रिस्क पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी. एंड रिस्क पॉलिसी मनी विल कम ओनली अपॉन डेथ, and where whole life policy maturity period of 20 years 10 years based on which term you have taken, money will come even though person is still alive. Correct? No, not always. जिंदगी के साथ भी साथ भी आएगा, सिर्फ बात भी नहीं. क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, वॉट एवर प्रीमियम वी पे, इट विल कवर योर मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रीइंबर्समेंट. बट ऑलवेज कीप इन माइंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. Life insurance, whatever money we pay for life insurance, every rupee will come back to us along with bonus. But whatever money we pay for medical insurance, 1 rupee also will not come back. समझे क्या आपने क्या बोला? I'll repeat once again, listen carefully. Life insurance, whatever money we pay, it will definitely come back to us along with bonus. But whatever money we pay for medical insurance, 1 rupee also will not come back. They'll only reimbursement medical expenses. That's it. You cannot tell, I did not claim anything, no, give me something. Nothing they'll give. And we are normal people. For the sake of reimbursement, we don't want any issues in our life. Yes. ऐसा सोचते क्या, साल खत्म होने का अभी तक यूज नहीं किया, कुछ तो हो गया तो रिइंबर्समेंट आ जाएगा. अरे इंसान है क्या है? तो समझ गए ना आप लोग? एवरीबॉडी. सो नो मोर डिस्कशन ऑन व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज मेडिकल. ओके, वी आर फाइनेंशियल डॉक्टर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स. अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल डॉक्टर्स. करेक्ट? नो, वी चेक द हेल्थ ऑफ द बैलेंस शीट, वी चेक द हेल्थ ऑफ P&L, वी चेक द फाइनेंशियल हेल्थ एंड टेल बॉस, हेल्थ इज वेल्थ, बट वेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ. करेक्ट है ना? उनका स्टेटमेंट है हेल्थ इज वेल्थ, बट अपन ये भी बोलते हैं नेक्स्ट लाइन, वेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ. करेक्ट? नो, बैंग ऑन. कम ऑन, टेल मी गाइस, लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड इन विच सेक्शन? मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड इन विच सेक्शन? 80C का लिमिट कितना है? 1,50,000. 80D का लिमिट कितना है? 25,000. सीनियर सिटीजन, बैंग ऑन. कम ऑन, आंसर खत्म नहीं हुआ अभी तक. ये भाई साहब कौन है? एक्स. ओ पता है यार मुझे. एज नॉर्मल कैटेगरी. करेक्ट? सो व्हाट इज दैट फिगर यू विल टेक? 25,000. बराबर है. व्हाट यू कॉल द बैलेंस एज टोटल इनकम. 80 TTA भी है ना? Excellent. We will talk about 80 TTA. Interest on savings bank account. कितना इंटरेस्ट आया अपने पास? How much we got? But how much will take under 80 TTA? Wonderful. We will take only 10,000. समझ में आ रहा ना बेटा? बेटा बोलो, कितना है टोटल इनकम?
अरे टोटल इनकम पूछा ना भाई. 23 lakhs. That's it. Now what we calculated is total income. समझ में आ रहा है बेटा? Sir, if you remember, yesterday, sorry, day before yesterday, we wrote something. What is the process of income tax? Determine residential status. वो हम second chapter में पढ़ेंगे, which will start from Monday. Monday will start second chapter of residential status. ठीक है ना? Second step क्या है? Compute income under 5 heads of income. Take deductions. Find out total income. Then calculate tax. Then reduce TDS and advance tax. Balance could be payable or refundable. बराबर है बेटा? चलो बेटा, टोटल इनकम तो आ गया ना अपने पास. अभी क्या निकालेंगे हम लोग? बोलो. टैक्स लायबिलिटी. बोलो. हाउ डू वी कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी? निकाल फटाफट. क्वेश्चन बताना. क्वेश्चन में क्या देखना है? अरे मैं आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा हूं कैलकुलेटर पे. I'm not asking you to write. Calculate in calculator, boss. टैक्स क्या? अरे इनकम ही 23 लाख है. ऐड करना है ना 4%. अरे बेटा ये इनकम है बेटा. आप इनकम पे सेस ऐड कर देते क्या? अरे मैडम बाप रे. 3,90,000. अरे निकालो बेटा टैक्स निकालो कैलकुलेटर में ट्राई करो. 5,51,304 आया क्या? राउंड ऑफ मत करो. राउंड ऑफ मत करो. 5,51,000 कुछ आया. बराबर है क्या? श्योर? क्या करें आप लोग बोलो? up to 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakh at the rate of 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%. Please don't use calculators for this man. 12,500. लास्ट वाले के लिए कैलकुलेटर यूज करो. इसके लिए कैलकुलेटर यूज मत करो यार. मेरा दिमाग हो जाना चाहिए. इट शुड सेट 2.5 to 5 lakh, 2.5 lakh, 5%, 12,500. Set. Answer should come like that. Next, 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%. Definitely 1 lakh. लास्ट वाला कैलकुलेटर यूज कर लो चाहिए तो. About 10 lakh, 30%. मैडम कैलकुलेटर क्या हुआ? 4,17,000. गुड. 5 lakhs 30,100. करेक्ट है बेटा. बट इधर आप एक गड़बड़ कर दिए. आप एक गड़बड़ कर दिए. हो गया बिस्किट. क्या टीडीएस नॉनसेंस यार. सीधा आप 23 लाख पे टैक्स निकाल रहे. इसमें क्वेश्चन में एक लॉटरी इनकम है. याद है क्या आपको? अच्छा आप बोले सेग्रीगेट करने का. ठीक है, वंडरफुल. अब स्टूडेंट बोलेंगे सेग्रीगेट करेंगे नहीं करेंगे आंसर सेम आएगा. नहीं आंसर तो सेम आएगा वो मुझे भी पता है. बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑलवेज सेग्रीगेट एंड देन फाइंड आउट. ठीक है ना बेटा? So what you should do always is that when you have a figure of 23,90,000, first on lottery income of कितना है बेटा वो? 1 lakh at the rate of 30%. Under which section? 115 BB कितना है वो? 1 lakh. सर आप मुझे ये मत बिल्कुल मत बोलो कि सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो भी टैक्स सेम आएगा. मुझे पता है सेम आएगा क्योंकि 10 लाख के ऊपर इनकम है. पर अगर 10 लाख के अंदर इनकम है तो टैक्स फर्क पड़ेगा. What is the tax, my dear friends? 30,000. Come on, what is the balance? What is the balance income, man? What is wrong with you, man? What is the balance income? 22 lakhs. Balance income is 22,92,000. Yes, sir. Yes, sir. दोस्तों बोलना बेटा. I thought we'll revise one concept in this question, but see how much concepts are coming. Nice. Balance to 22,92,000. चलो इस पे टैक्स कैसा निकालेंगे आप? बोलो बोलो बोलो. Our same story will repeat.
चलो फटाफट बोलो. Up to 2.5 lakh nil. 2.5 lakh to 5 lakh at the rate of 5%, which comes to 12,500. 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%, which comes to 1 lakh. बराबर है ना बेटा? About 10 lakh at the rate of 30%. कितना है? 3,87,000 total. 5 lakhs? 5,001,000. Total tax 5,30,100. ऐड करेंगे. Total tax plus HEC at the rate of what beta? 4%. कितना है HEC? 21,204. Total including HEC 5,51,304. सब बराबर है? Should I close the answer? Should I close the answer? No. Why? Less TDS. अरे TDS करना पड़ेगा ना. कितना कट गया TDS बोलो? 1 lakh. 1 lakh is on salary. 1.5 lakh on PGBP. 30,000 on lottery. Sorry? अरे दोस्त आप ये बिल्कुल समझो कि टैक्स अलग है, टीडीएस अलग है. टैक्स अलग है, टीडीएस अलग है. बराबर है ना? आप 1 लाख पे जब टैक्स पे करोगे 30,000, मुझे एक बात बताओ, टीडीएस जब कट गया हम माइनस कर रहे हैं ना यार उसको. मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट को 30,000 जमा हो गया ना. आप बोलेंगे कि सर माइनस मत करो, मतलब उधर भी 30,000 पे करेंगे, हम भी जब से 30,000 पे करेंगे 60,000 देंगे क्या टैक्स गवर्नमेंट को. समझ गए ना आप लॉजिक? दोस्त आप समझ गए मेरी बात? सर स्टूडेंट इज आस्किंग सर लॉटरी पे 30 ऑलरेडी कट गया ना सर, इसलिए तो माइनस कर रहा हूं ना मैं. सर मैं लॉटरी ऑर्गेनाइज किया बॉस, आपको लॉटरी मिला, मैंने आपको 1 लाख की जगह 30,000 काट के 70 दिया आपको, तो मैं 30 आपके पास जो डिडक्ट किया वो तो गवर्नमेंट को पे कर दिया ना. मतलब गवर्नमेंट को 30,000 ऑलरेडी जमा हो गया ना. अब तुमको जब 1 लाख इनकम आया, मतलब 30 काट के 70 आया, अब वापस 30,000 गवर्नमेंट को पे करेंगे क्या? बोलना दोस्त. इसलिए उसको माइनस कर रहे. दोस्त समझ में आ रहा है क्या? Are we getting great level of clarity on this concept? Speak out, my dear friends. Everybody, sir. चलो TDS कितना है? 2.8 lakh. 1 lakh is on salary, 1.5 lakh on PGBP, 30,000 is on lottery. कितना है TDS? 2,80,000. Sir, this kind of problem is called total income problem, which comes in exam for 8 to 10 marks, including lottery income, including capital gains income. जो अभी तक पढ़ाया नहीं आपको, आज पढ़ाऊंगा. तो समझ में आ रहा है क्या? सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट? वेरी कोर सब्जेक्ट ऑफ सीए करिकुलम. आई मीन आई रेस्पेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बट आई लव माई सब्जेक्ट मोर फॉर 2 reasons. 1, आई एम टीचिंग इट. सेकेंड, आई लव दिस सो मच बिकॉज वेरी वेरी प्रैक्टिकल. कुछ भी बोलो, टैक्स के बिना तो सीए जी नहीं सकते, इंपॉसिबल है वो. क्लियर है? चलो क्या है आंसर अभी? नेट टैक्स payable. You got my language, no? Net tax payable. Why did I write net tax payable? Because I reduced TDS. Since last 3 days, today's 4th day only, no? Yeah. Since last 3 days, I never used this word called net tax payable. समझ गए क्या आप लोग? अगर TDS 2,80,000 की जगह it would have been 580. I would have wrote the word net tax refundable. नेट टैक्स रिफंडेबल आता था वहां पे. समझ में आ रहा है बेटा? दोस्तों ये क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? उसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, आपको करना है वो क्वेश्चन. बोलो टैक्स पेपर कितना है? 2,71,000. रॉन्ग आंसर. 300. राउंडेड ऑफ as per section. That's it. समझ में आया बेटा क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट. व्हाट इज डाउट? वो सर लॉटरी वाला जोड़ के आपने लिखा है. हाँ जोड़ के लिखेंगे ना. नॉर्मल
नॉर्मल वाला प्लस लॉटरी वाला है। हाँ पूरा मिलके लिखे ना, 30,000 प्लस 5,100,000। आपको अभी भी फीलिंग है कि अपन लॉटरी पे दो बार टैक्स पे कर रहे? तो बेटा आप ये समझो कि दिस इज 5,01,000, 5,100,000 and that is 30,000. I started with 5,30,100 and I reduced 30,000 TDS no on lottery. So am I paying double tax on lottery? और if you students are still sitting in the mindset that सर लॉटरी पे 2 बार टैक्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं जाएगा बेटा। हम TDS माइनस करने का मतलब क्या है? TDS माइनस करने का मतलब कि हम टैक्स कम पे कर रहे हैं ना, कम पे कर मतलब तो ऑलरेडी कट गया है भाई, बाकी पे करेंगे हम, बराबर है ना। अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे पीजीबीपी इनकम जब मेरे पास 15 लाख आया, टीडीएस कितना कर दिया ऑलरेडी? 1.5 लाख। मैंने टैक्स किस पे कैलकुलेट किया? 15 पे कैलकुलेट किया। 15 पे कैलकुलेट करने के बाद 1.5 लाख माइनस किया, मतलब क्या है? मतलब जो टीडीएस ऑलरेडी गया वो माइनस करके बाकी पे कर रहा ना मैं, तो डबल टैक्स हो रहा है क्या? तो टीडीएस का नुकसान है क्या? So let me tell you honestly, wherever I go for teaching, I mean in Hyderabad, Pune or different places, wherever I go, everybody is paying me white money only. I mean nobody is giving me cash. Everybody is doing a transfer. White में black में फर्क समझ गए ना? Black money is not an illegal money. Illegal money is different. Black money is different. Illegal money is earned through illegal sources. Black money is earned through legal source, but it is not accounted. करेक्ट नो? सम ऑफ देम जस्ट लाइक दैट टेल इसके पास बहुत इलीगल मनी है। इलीगल मनी नहीं है मेरे भाई, ब्लैक मनी है। मेरा नहीं, एग्जांपल बोल रहा हूं, समझ गए ना आप लोग? दोस्तों क्लियर है ना? एंड whoever is paying me, they are doing 10% TDS and giving me, because in case of professional payments there is 10% TDS. मैं आज तक नहीं रोया, मैं 10% कट के जा रहे हैं, मैं क्यों रोऊंगा भाई? वो तो मुझे कभी ना कभी तो पे करना ही है ना, और कल के दिन जब मैं पे करूंगा वो माइनस करके पे करूंगा ना भाई। उल्टा मैं तो खुश होता उसमें, क्यों बोलूं? थोड़ा कट के आ रहा है। अगर थोड़ा कट के नहीं आऊंगा, लास्ट में अगर बोलेंगे 5 लाख टैक्स, अरे बाप रे, तब तो झटका लगेगा ना यार। एंड गवर्नमेंट लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट? नेम ओनली सेज टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट लॉजिक ये है इसके पीछे कि हम सोर्स पे ही उसको पकड़ेंगे, ये बंदे को भागने का स्कोप नहीं रहेगा। माय एग्जांपल आई एम गिविंग, if they don't put the TDS concept, imagine expert gives me entire 10 lakhs like that only, I don't feel like paying tax, sir. I personally don't like paying tax. The problem is in India, nobody likes to pay tax, but sometimes we have to pay tax. We have no option. Correct, no? Yes, sir. और ये सोचो यार, अगर वो पैसा वाइट की जगह कैश में आता था, मन करेगा क्या टैक्स पे करने का? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? That's the biggest problem in India. Lot of things are going in cash. Things move in cash. It's all unaccounted. People are enjoying. Out of 140 crore population in India, 50 crores are below 18 years. Ignore them. Balance is 90 crores. Out of 90 crores, 10 crores are age-old people who are not earning any income, completely retired. Balance is 80 crore population. In that 80 crore population, last year, 10 crore people filed their return. Means there are 70 crore population in India who are earning income, but they are not filing income tax return. That means government is not getting a single rupee from them. So 10 crore people are running 140 crore population in India. And I am also in that one of the 10 crores. Just joking, but I hope you got a clarity on the concept, guys. समझ में आया ना बेटा? सबको clear है ना? Everybody, sir. You are also in the 10 crores. I know. नो रिटर्न फाइल करे पूरा लास्ट ईयर, टैक्स पे नहीं किए, अच्छा रिबेट ले लिए, अच्छा ठीक है, सो यू आर कंट्रीब्यूटर टू द टैक्स। बोलना दोस्त, 1 लाख ही लिया ना बेटा? अरे ये क्वेश्चन को क्या हो गया? ओ माय गॉड, लॉटरी 1 लाख लिया ना बेटा? इधर किधर लिया भाई? 30,000 1 लाख ही लिया ना दोस्त? अरे टैक्स तो 30% है ना भाई, और इनकम ₹1,00,000, टैक्स 30,000 है। समझ में आ गया ना? मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा पूरा, एक परफेक्ट हो जाएंगे एकदम। तो सबको समझ में आया क्या बात? यार बोलना बेटा। फ्रेंड्स, आर वी क्लियर? एवरीबॉडी सर? नाउ वन लास्ट पॉइंट आई विल टेल, उसके बाद आपका डाउट्स मैं सुन लूंगा, सबका डाउट सुन लूंगा। सुन लो, आंसर हो गया बट सुन लो। सर, practical point, let me tell you now. There is an employer.
there is an employee. Employer will pay salary to employee. At the time of paying salary, let me tell you, he will do TDS. समझ में आ रहा है क्या? और इसका सैलरी की केस में TDS रेट क्या है बोलूं आपको, नॉलेज के लिए बताता हूं. अभी तो नॉलेज के लिए, बाद में एग्जाम के लिए बताऊंगा. TDS रेट इज इक्वल टू टैक्स रेट इन केस ऑफ सैलरी. मतलब जितना टैक्स एम्प्लॉय को पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, जितना टैक्स एम्प्लॉय को गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, उतना टैक्स एम्प्लॉयर TDS जैसे कट कर देगा. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या आपको दोस्त? समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, कल के दिन, tomorrow, when employee is filing his income tax return, he will calculate his tax payable, reduce TDS, balance will be zero, because TDS and tax both are same, but not necessary every case both are same. So let me tell you honestly one point. My income is more than 10 lakh. That means I'm paying 30% tax also, no? But whoever is paying me professional fees, they will do 10% TDS only. Because in act only they told for professional payments TDS is 10%. अब मैं बोल सकता क्या 10% कट गया, मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा, हो गया टैक्स. Can I say that? अरे वो TDS है मेरे भाई, वो उनका जिम्मेदारी है. ये टैक्स है मेरे भाई, ये तेरा जिम्मेदारी है. TDS is the responsibility of the payer. Tax is the responsibility of the payee. कंट्रोल. सर समझ गए आप लोग? TDS is the responsibility of payer. अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो TDS नहीं करता. आई कैन नॉट टेल दैट TDS किए नहीं ना, मैं भी टैक्स पे नहीं करता. उनको जो करना चाहिए वो नहीं किए, मुझे जो करना चाहिए मैं भी नहीं करूंगा. अरे ऐसे थोड़ी होता मेरे भाई. समझ में आ रहा है क्या? वो 10% कट करेंगे तो आप बोलेंगे कि 10% गया मैं कुछ नहीं दूंगा. भाई तेरे को तो 30% पे करना है ना. तो मैं क्या करूंगा, कल के दिन 30% कैलकुलेट टैक्स निकालूंगा, जो TDS कट गया माइनस करूंगा, बाकी कुछ पे करना है तो पे करूंगा. अगर मेरा टैक्स कम निकला, जो एक्स्ट्रा कट गया, क्या करूंगा? Refund. I think we are getting a great framework on what is tax, man. Don't underestimate this topic. Clear है दोस्तों? बोलो सर. इधर सैलरी के केस में जितना एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है, जितना इसका टैक्स होता है, उतना ही ये TDS काटता है. मतलब क्या हो गया, इधर TDS और टैक्स दोनों मैच हो गया ना. जब मैच हो गया, इसको फिर से जेब से कुछ भरना पड़ता क्या? खत्म हो गया कहानी. मेरे केस में अज्यूम करो, एक एग्जांपल देता हूं, 1-2 मिनट. मेरे केस में अज्यूम करो, सम X पर्सन मेड पेमेंट टू शिवा तेजा, एग्जांपल, ठीक है. उसने मुझे 10 लाख पे किया बॉस, और पूरा समय मेरे पास कोई इनकम नहीं है भाई, सिर्फ 10 लाख की इनकम है. अरे बोलना बेटा, ये कितना TDS करेगा? 1 लाख की करे ना TDS. अरे 10% है ना मेरे भाई. बताए ना आपको मैंने अभी, प्रोफेशनल को पेमेंट करेंगे तो 10% TDS है करके. अरे वो तो सैलरी है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों को बीच में? बोलो कितना TDS किया? 1 लाख. कितना TDS किया? वो किसका जिम्मेदारी है? X का जिम्मेदारी. इन आवर केस आई विल राइट बेटर वर्ड, पेयर पे. TDS किसका जिम्मेदारी है? पेयर. उसने अपना काम निभा दिया. He has done what he has to do. Boss, now tell me, when Shiva Teja is filing his income tax return, I have to calculate my tax, no? Speak out. And my tax is 1,12,500. 10 लाख पे उतना आता ना मेरे भाई. सेस निकालो, 4% ऐड करो. कार्तिक, tell me quickly. How much is 4% of this? 4,500. 1,16,000. Sorry. 1,17,000. ये हो गया मेरा टैक्स. मतलब मुझे 10 लाख अगर कमाई हुआ, आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑफ 1,17,000 टू द गवर्नमेंट. हाउ मच टैक्स ऑलरेडी गॉन इन द फॉर्म ऑफ TDS? दैट वेंट ऑन माय नेम ओनली, नो? मेरा ही नाम पे गया ना, मेरा पैसे से ही कट गया ना यार. वो लोग जेब से पे करे क्या? In from my amount only they deducted, no? That means I only paid, no? कितना वो फिगर? Balance 17,000 I'll pay from my pocket. Net tax payable. समझ गए आप लोग? दोस्तों, फुल क्लैरिटी आ गया? बोल आ गया ना? चलो नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट एग्जांपल. Let's take same situation now. X is paying
टू शिवा तेजा 8 लाख रुपीस, मेरे पास और कुछ इनकम नहीं है, सिर्फ 8 लाख ही है, बट फिर भी ये भाई साहब 10% टीडीएस तो करेगा ही करेगा ना यार। कितना है 10% टीडीएस? 80,000। जब मुझे टैक्स पे करने की बात आएगा, जब 8 लाख पे मैं जब टैक्स करूंगा, कितना आएगा टैक्स? 2.5 लाख तक तो जीरो, 2.5 से 5 12,500, 3 लाख पे 20% 60,000, 60 प्लस 12,500 72,500 प्लस 4% 75,400। बराबर है बेटा? आपको लिखना है तो लिख कर चेक कर लो। क्लियर नो? What is the TDS already done? What will happen balance? Net tax refundable or net tax refund 4,600 400, ठीक है। That's it. I hope we are getting a great amount of clarity now. ये TDS का कहानी समझ गए ना आप लोग? दोस्त आपका अभी तो आपका फीलिंग निकल गया ना, डबल टैक्स तो नहीं आ रहा ना? डन। आपका कुछ डाउट था? 1 मिनट, वो पहले पूछे। आस्क। किधर आ जाए? ATD बोलना बेटा। उसका भी आएगा, हाँ, बट किसी और के भी आप मतलब वो कौन है आपको बताऊंगा बाद में। मीन्स इट लॉ कवर्ड सेल्फ, स्पाउस मतलब हस्बैंड ऑल्सो पॉसिबल, डोंट वरी। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, इतना ही कवर्ड है। अब ये मत बोलो ये मेरा दोस्त है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, स्टिल नो डिडक्शन। तो आई मीन सी योर गुड नेम Jayesh, let me tell you one point, not just to him, for everybody. See, whatever ATC, ATD I have told you now, sections are not over. There is still lot of depth in that sections, which I will teach you when I go to that topic. But now I'm only giving you overview of that, basic of that, so that we get a complete clarity. समझ गए ना? किसको करे तो आएगा, किसको करे तो नहीं आएगा, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कहानी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। दोस्त बोलना भी ठीक है, तो टीडीएस कट नहीं करेगा वो, टीडीएस करेगा ही नहीं। गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, गुड आंसर ऑल्सो। So are you clear with this question? He asked a question, what if employee salary is 5 lakhs, less than 5 lakh, टीडीएस आएगा क्या? नहीं, जब उसका टैक्स जीरो है तो एम्प्लॉयर टीडीएस करेगा ही नहीं। और आप ये सोचो यार, टीडीएस करेगा तो पूरा का पूरा टीडीएस रिफंड लेना पड़ेगा ना, बेचारे को नुकसान होगा ना यार, उसका पैसे कट गया, उसको रिटर्न फाइल करो, रिफंड ले लो, तब तक तो पैसे अटके ना यार। आएगा पैसा, कहीं जाएगा नहीं, बट टुडे मनी टुमारो मनी इज नॉट वन एंड द सेम, नो। टुडे रुपी टुमारो रुपी इज नॉट वन एंड द सेम। 5 years back, exactly, I mean that word is called time value of money. सुनिए ये वर्ड इकोनॉमिक्स में, wonderful, there is a big point of time value of money, there is no doubt about it man, it's not an easy thing. The time is biggest thing. Are we clear? Any more doubts in this concept? सबको क्लैरिटी आ गया इस पे? Everybody sir? चलो, please put side heading, please put a side heading, points to be noted, then I'll give 3-4 points, then take the example. अब एग्जाम्पल लिखना चालू कर दिया ऑलरेडी, थोड़ा जगह छोड़ के लिखो, फिर एक्सपेक्ट किया हो जाएगा। नहीं मैं बोलूंगा ना कुछ अभी, Points to be noted. पॉइंट्स टू बी नोटेड। बोलू क्या? फर्स्ट पॉइंट, डिडक्शन इज अलाउड for payment of life insurance premium. Deduction is allowed. Deduction beta, deduction is allowed for payment of what beta? Life insurance premium under section, बोलो बेटा कौन सा सेक्शन है? 80C. Full stop. Continue. Maximum deduction limit. Maximum deduction limit
maximum deduction limit under section 80C is कितना बेटा 1,50,000 1,50,000. Next point. In case of payment of what beta? Medical insurance premium. In case of payment of medical insurance premium, come on. Deduction is allowed in case of payment of medical insurance premium deduction is allowed under section 80D. Under section 80D, full stop. Maximum limit under section 80D. And one second, sorry to interrupt, just one point, listen here carefully. In 80C, life insurance is covered in which section? But apart from life insurance, there are 10-15 more points which we will learn separately. This point is clear, no? But in 80D, only one point is covered. That one point is? That's it. Clarity आ रहा है ना बेटा? अब ये बिल्कुल मत बोलो कि 80C में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, गलत है. पर ये बोल सकते हैं कि 80D में सिर्फ, ठीक है ना बेटा? चलो, what did you write? Maximum limit under section 80D is 25,000. 25,000 in case of non-senior. In case of non-senior. In case of non-senior. Full stop. In case of senior citizen, in case of senior citizen, in case of what beta? Senior citizen, come on. Maximum limit is 50,000. Barabar beta. Good. Friends, are we getting clarity on this point? And in this question, what other concepts we covered? Right on. Gift in excess of 50,000 shall be, gifts in excess of 50,000 shall be fully taxable. Shall be fully taxable. The meaning of that word fully taxable is what you know. If you get 60,000, you should not tell 10,000 is taxable. पूरा 60 is taxable. समझ में आ रहा ना बेटा? इस केस में कितना आता है इसको गिफ्ट में? 65. अपन पूरा 65 को टैक्स किए ना? 15 लिखे क्या हम लोग? Exactly. चलो क्या लिखा? Gift in excess of 50,000 shall be fully taxable. Bracket section 56 to 10. Write properly, please. Check and write properly. 56 to 10. Section 56, subsection 2. Wonderful. 56 to 10. Clear enough? Yes. Full stop. However, in some cases, in some cases, gifts are not taxable. Gifts are not taxable. Gifts are not taxable even though they are more than 50,000. Even though they are more than 50,000. So getting clarity? Yes. That some cases are something like relatives. So समझ में आया ये point? मतलब in some cases, even though it's more than 50,000, still will not tax that gift. What are those cases? When we go to that chapter, we'll learn.
Clear है बेटा? If you get from friends and all, taxable. But if you get from relatives, it's not taxable. Who is relative, we learn. And then one more special point there, gift received on the occasion of marriage is exempt. मतलब शादी में जितना भी मिलेगा exempt. वो सर रिलेटिव ना रिलेटिव, बट इट इज शादी के दिन रिलेटिव नॉन रिलेटिव कुछ लेना देना है नहीं. अरे ऐसे थोड़ी होगा कि शादी कर रहे हैं, कोई आए ये रिलेटिव है ले लो गिफ्ट, रिलेटिव नहीं है गिफ्ट मत लो, ऐसा थोड़ी होगा यार. गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज फुल्ली exempt. एंड लॉ दे नेवर टोल्ड मैरिज एनिवर्सरी. एनिवर्सरी बोलना चाहिए था यार, मजा आता था, हर साल लेते थे कुछ ना कुछ. सर समझ गए क्या? सर मैरिज इज नॉट जस्ट अ फैमिली प्लानिंग मैन, इट इज ट्रेमेंडस टैक्स प्लानिंग. ठीक है, आर वी क्लियर? चलो बेटा बाद में बात करेंगे. व्हेन वी गो टू द चैप्टर ऑफ गिफ्ट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वी विल टॉक ए लॉट अबाउट गिफ्ट विच केस एग्जाम विच केस नॉट टैक्सेबल. उधर ये भी बताऊंगा आपको मैं, शादी से पहले एंगेजमेंट में मिले तो क्या होगा, एंगेजमेंट में रिंग जो एक्सचेंज करेंगे क्या होगा. लॉ टोल्ड नॉट टैक्सेबल प्रोवाइडेड मैरिज इज डन. इट बिकम्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज. इफ मैरिज इज नॉट डन दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर ओनली फियांसी. बट फियांसी बिकेम एक्स, क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल. अरे यार ये सब पॉइंट्स आएगा. कंट्रोल कंट्रोल, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो पूरा पढ़ा दूंगा, अभी छोड़ दो. जब जब when we go there we learn all that. Okay, no? Very interesting topic is there. When we go there we learn. ठीक है ना बेटा? So if you would have given some gift to your ex, I mean not ex, I mean present on Valentine's Day, it is taxable. If it is more than 50,000. ठीक है ना बेटा? क्या बोल रहे थे आप? हाँ, it can become X, it may become X, never know. कुछ भी नहीं बोल सकते. बट गिफ्ट नॉन रिलेटिव से सर 50,000 से नीचे में नॉन टैक्सेबल. क्या क्या क्या? नॉन रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से 50,000 से बिलो में वो नॉन टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल है. बट आप एक चीज ध्यान में रखना है आपको, 50,000 लिमिट है, एक बंदे से नहीं, पूरा साल में सबसे. अगर ऐसा पॉइंट है हम अपना दिमाग चलाएंगे, उसको देंगे, उसको बोलेंगे भाई तू 49,000 दे, तू भी 49 दे, तू 48 दे, तू 47 दे, तू 46 दे, और हम बोलेंगे नॉट टैक्सेबल. ऐसा थोड़ी होगा. 50,000 लिमिट, पूरा साल का सब गिफ्ट मिलके. सर हम होशियार है, इनकम टैक्स 1.5 होशियार है. बोलना भाई. इंडिया में कल्चर गिफ्ट का, अरे बहुत है यार इंडिया में गिफ्ट कल्चर. हो जाए ना 50,000 के ऊपर है तो. अगर रिलेटिव नहीं है तो आपको किससे लेना है बोलो, मैं बताता हूं आंसर आपको. 50 के ऊपर गया क्या, नॉट टैक्सेबल. गुड क्वेश्चन. सम आइटम्स आर सम थिंग्स आर स्पेसिफिक. सम क्या बोले यार, some stuff, some articles, better word, some articles are specifically not taxable. What are those? We'll learn when we go there. Because if I start that topic, it will take 1-2 hours. पूरा पढ़ा दूंगा, but अभी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा. When I get into it, I cannot leave it now, so बाद में बताऊंगा. But answer for you is not taxable. अभी ये सोच रहा है, अच्छा मतलब मैं पैसे नहीं लूंगा, गाड़ी लूंगा. अरे बहुत इसलिए बोला मैं, it's not just normal planning, it is tremendous tax planning, boss. बहुत बड़ा कहानी है गिफ्ट का. वो चैप्टर के बाद आप डिसाइड करेंगे किसको अपने साथ रहने देंगे, किसको ना रहने देंगे. चलो, आर वी क्लियर? अपन बताएंगे ना सर रिटर्न में. आप ये बोल सकते हैं, अच्छा गुड क्वेश्चन. ये बंदा पूछ रहा है इनकम टैक्स में पता कैसा चलेगा गिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा. क्वेश्चन आंसर फॉर यू इज, इफ इट इज इन कैश दे विल नेवर गेट टू नो. If it is in bank account, high possibility notice can come. Because what happens is, whenever bank transactions are happening, if the bank transactions are going more than 10 lakhs, 20 lakhs, bank will prepare a list of all that accounts and they'll submit to income tax department. Income tax आपको नोटिस भेजेंगे कि भाई तेरे अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शंस हुआ, 20 लाख एक साथ आके अकाउंट में पड़े, किधर से आए? क्या बोलेंगे आप? गिफ्ट. मामा से आए, ससुर से आए, तो आपको बोलेंगे नॉट टैक्सेबल, एंजॉय. उसके बाद ससुर को नोटिस जाएगा, आपका दामाद बोल रहा है 20 लाख रुपए आप दिए, किधर से आया 20 लाख, सोर्स ऑफ इनकम बताओ. अरे बराबर है ना यार. अरे ससुर जी साल में 5 लाख का रिटर्न नहीं दिखा रहे, 20 लाख रुपए कैसा ट्रांसफर करे दामाद को? आया किधर से? फिर आप बोल रहे हमने कैश डिपॉजिट किया, ये कैश आया किधर से?
Explain. If you don't explain, we call it as unexplained income. Today only I'll teach you that. You raise the topic, I'll complete it now only. It's called unexplained income, which is taxable at the rate of 60%. Plus surcharge 25%. Plus cess 4%. Effective rate is 78%. This is only tax. Interest is different. Penalty is different. अब दे बेटा गिफ्ट और. So पता चलेगा दोस्त. If not immediately, but definitely they'll know. छोटे छोटे अमाउंट्स में क्या होता है, 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 10,000, 20,000 मालूम नहीं पड़ेगा, बट जहां पे बड़ा अमाउंट आते मालूम पड़ेगा. समझ गया ना? डन. सर जी कार जब कोई गिफ्ट में कहता है कि मिला आपको, तो वो टीडीएस वो काट के वो आपसे पैसा रिसीव करेगा. वो लॉटरी वाला है ना भाई. अरे वो लॉटरी गिफ्ट है क्या? अरे लॉटरी अलग है, गिफ्ट अलग है. लॉटरी थोड़ी हो रहा है. लॉटरी तो यार किस्मत है. गिफ्ट क्या है? प्यार है. अरे प्यार और किस्मत एक ही होता क्या? ठीक है, किस्मत से प्यार. दोनों में फर्क है ना भाई. गिफ्ट में तो उसमें भी टीडीएस. अरे नहीं भाई, लॉटरी में तो टैक्स आना ही आना है. वो लॉटरी है, ये तो गिफ्ट है. नहीं सर, उसमें टीडीएस वाला सोच रहे थे. नहीं बिल्कुल नहीं यार, वो तो लॉटरी है. लॉटरी तो छोड़ी, लॉटरी तो टैक्सेबल है ही. ये तो गिफ्ट है. बोलना दोस्त. सर ये भी बहुत बार नोटिस आता है सर. लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, आप अगर आप हर साल 10 लाख इनकम दिखा रहे, अचानक आप 2 करोड़ का प्रॉपर्टी लिए, नोटिस विल कम फ्रॉम इनकम टैक्स. बॉस यू आर शोइंग 10 लाख एवरी ईयर. आप लास्ट 10 साल में करोड़ रुपए दिखाए, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी कैसे लिया आप? बताओ सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप सीधा बोलेंगे मेरा दोस्त मेरे को लोन दिया. तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, इतना पूछेंगे कि उसका पैन नंबर दो, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर. उसको नोटिस जाएगा. उसको भी परेशान नहीं करेंगे. उसको इतना बोलेंगे कि आपका दोस्त बोल रहा है तो आपने उसको 2 करोड़ दिया, आया किधर से तू बता. नहीं बताएंगे तो वो गया. अपने को कुछ नहीं बोलेंगे. अपन तो एस्केप. समझ गया? जो दिया वो गया, इसको वाट लगेगा. समझ गया ना बेटा दोस्त? ट्रांसफर मतलब सेल करे, गिफ्ट दिए, वो टैक्सेबल हो जाएगा. अगर रिलेटिव से आया तो टैक्सेबल नहीं है. सबका प्लानिंग समझ गया ना? हम शादी करेंगे, उसमें हम क्या क्या लेना, हम ये लेना, ये लिए तो टैक्सेबल नहीं है, ये लिए तो टैक्सेबल. ये बंदा पूछा कार, ये पूछ रहा है सर मैं बिल्डिंग लेता हूं क्या होगा? सर रिलेटिव से आया ना, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है दोस्त. दोस्त अगर प्रॉपर्टी भी मिला, इमो प्रॉपर्टी भी मिला, 10 करोड़ का भी प्रॉपर्टी है, फिर भी टैक्स नहीं आएगा अगर रिलेटिव से आया तो. एंड फॉर यू, फादर इज रिलेटिव, मदर इज रिलेटिव, फादर इन लॉ इज ऑल्सो रिलेटिव, मदर इन लॉ इज ऑल्सो रिलेटिव, एवरीबडी इज रिलेटिव. और रिलेटिव को ना हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं यार, बहुत डरते उसमें. फादर में सर दैट इज द होल पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट. नो, गवर्नमेंट का लॉजिक इतना है कि बॉस ऑलरेडी फादर जब परचेस किए, वो तो टैक्स पेड मनी से ही परचेस किए, इसलिए वापस इधर टैक्स नहीं कर रहे. बट अगर फादर ने नहीं दिया, दोस्त ने दिया, तो उसको भी पकड़ेंगे, तुमको भी पकड़ेंगे. यस माय डियर फ्रेंड. वो टैक्सेबल है एक्चुअली दैट इज टैक्सेबल, बट पीपल डोंट शो. दैट इज अ प्रॉब्लम. नो, बिकॉज इंडिया में इतना गोल्ड का कल्चर है, पीपल लव गोल्ड लाइक एनीथिंग. वो गोल्ड देते हैं, रिंग्स, चेन्स, व्हाट नॉट, एवरीथिंग दे विल गिव ऑन बर्थडे, दैट दिस. एंड गवर्नमेंट कैन नॉट नो दैट. दैट इज अ प्रॉब्लम. विजिबिलिटी इज नॉट देयर. ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट रखे कि वो लोग, बिकॉज दे वांट टू कैच, दे शुड बी विजिबल. इफ इट इज नॉट विजिबल, हाउ विल दे नो? Yeah, I'll ask you one question. In your home, there is a function done. 30 relatives have come. Everyone has given some gold. How will government know? Unless you show an income tax return. Atleast इसके केस में तो बैंक में पैसा आया, अरे मालूम तो पड़ेगा. गोल्ड में क्या मालूम पड़ेगा? सर गोल्ड इंडिया में कितना ज्यादा ब्लैक गोल्ड है, I mean, उसका कोई लिमिट ही नहीं है. Huge gold is there in India. Huge. Tremendous gold is there in India. That's why Modi ji brought one scheme which became utter failure last year. 2-3 years back, just before COVID, Modi ji brought one scheme telling one fine day you came in front of TV, like that day. 500 रुपए बंद, 2000 रुपए बंद, याद है ना? Like that one day came in front of TV. भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भारतवासियों, this is how we start. And he told, इंडिया में इतना ज्यादा सोना है कि उसका कोई हद नहीं है, तो हम इस द्वारा एक स्कीम लेके आ रहे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम.
जितना भी आपके घर पे गोल्ड पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, आप वो गोल्ड लेके आके बैंक में जमा कीजिए। उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो टैक्सेबल है ही नहीं। मतलब जो आपके घर पे वैसे सोना है, गोल्ड ऐसे सोना है, वो लेके आओ, उसमें आपको कुछ फायदा तो होगा। Like that he told one scheme. His idea was what, you know, once that gold comes into the bank, they will ask, ये आया किधर से, बोल, उसको पकड़ेंगे। And it became utter failure. Why became failure, you know? जो भी लेके आया, ये मेरे दादी का सोना है, ये मेरे नाना जी का चेन है। किधर है नाना जी पूछने के लिए? किधर है नाना जी पूछने के लिए भाई? Literally, lot of drama happened behind this, boss. Lot of drama happened. गुजरात में एक बंदा जाके एक चेन लेके जाके गोल्ड में जमा, the chain was almost 10 तुलास, 3-4 लाख का गोल्ड था वो बैंक में जाके जमा किया। उसको पूछे किससे, किधर से आया? वो बोले मेरे दादाजी मेरे दादा को दिए, मेरे दादा मेरे पप्पा को दिए, मेरे पप्पा मेरे को दिए। तो वो बैंक वाले पूछे ये तो नया दिख रहा है। ये नया है, पुराना था, मैं जाके चेंज करा के नया लिया। इतना फेल हो गया ये स्कीम। समझ में आ रहे क्या आप? अरे गोल्ड में तो इतना मार्केट है गोल्ड में कि आप पुराना गोल्ड है आपके पास, लेके जाओ, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे दो, नया तो आ जाएगा ना यार। सिंपल। बहुत डिस्कशन हो गया इस बारे में, ह्यूज। डन। एनी मोर डाउट्स? मैडम आपका डाउट क्लैरिफाई हो गया ना? गिफ्ट का ही है क्या अभी भी? हाँ तो फिर पूछो, गिफ्ट तो बाद में देख लेते, बहुत है उसमें कहानी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते दूसरे, तो जब वो दूसरा परचेस करते हैं उसको स्टैम्प ड्यूटी तो लगता है, तो इट कैन बी मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू दैट वी आर पेइंग। आप कौन सेक्शन की बात कर रहे हैं? 145 145 सेक्शन कौन सा पढ़ा है आपको? मैं 145 कब पढ़ा है मैं आपको? 175। हाँ बोलो अभी, बोलो वापस बोलो। अरे सेक्शन नंबर गलत सुने तो मेरा दिमाग बंद हो जाता। हाँ वो तो लगेगा ही नहीं यार। अरे वो तो अपना इंटरनल लेना यार, अपना इंटरनल सेटलमेंट है, तुम्हारा हेडेक है वो, और तुमको लगता है कुछ फायदा हो रहा तो करो, मतलब मत करो, होता है तो बात है। बराबर है ना? गवर्नमेंट का फंड है, इफ यू ट्राई टू प्ले दैट गेम्स विल कैच यू, दैट टू विल कैच यू इन प्रीवियस ईयर ओनली। क्लियर है? जरूरी नहीं कि वो करेंगे ना कोई, और हमेशा टैक्स ही ज्यादा होता है, स्टैम्प ड्यूटी कम होता है, याद रख लो ये बात, ठीक है ना? वो स्टैम्प ड्यूटी का परसेंटेज है 6%, 7%, टैक्स का 30% ऊपर चल रहे हैं हम। बोलो, इधर कोई हाथ उठाए गिफ्ट के रिलेटेड, ठीक है? बोलो लास्ट। इसलिए उसके ऊपर नहीं लगता, नहीं है, फादर रिलेटिव है इसलिए एग्जम्प्ट है, फादर रिलेटिव है इसलिए एग्जम्प्ट है। अगर आप मेरे दोस्त थे, आप भी कुछ पैसे कमाए, उस पर टैक्स पे करे, उसके बाद आप मुझे गिफ्ट दिए, फिर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, वो तो पक्का है। फादर दिए इसलिए टैक्सेबल नहीं है, फादर टैक्स पे करे उसके लिए नहीं, फादर रिलेटिव है इसलिए। करेक्ट? नो? I mean accounts you learn to know every transaction is different, every event is different, अलग अलग ट्रांजैक्शन है वो, बराबर है ना? फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, यू पेड फीस टू एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इज गिविंग मी सेम मनी टू मी, कैन आई टेल जो पैसे उधर मिला उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिए, मैं वापस क्यों पैसे पे करूं? करेंसी नोट तो सेम ही है। That transaction is different, this transaction is different. Expert will pay tax on their income, I will pay tax on my income. Got it? No? Done. Over. Sir, are we done? Good. I loved it actually. Good. Participate like this. We'll enjoy the concept. Anywhere you have a doubt, feel free to stop and ask. Okay, my dear friends? I'll be happy to answer. Don't worry. Can we proceed? Friends? चलो लिख लो बेटा. Good. मजा आ गया. Thanks. From material, we will start solving questions tomorrow.
जो सीक्वेंस पर आया वो अलग थोड़ा अलग रहता है उसमें. दैट विल बी डन. चैप्टर खत्म होगा, चेक कर लो आप, सेट हो जाएगा. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन लर्निंग दैट पैटर्न विल टेक. दैट्स द रीजन. When you revise at home, revise only from what we wrote in the class. After chapter is over, you can see both. After chapter is over, then you will find everything same. Because for example, in first chapter, if you see my material, nowhere you will find ATC, ATD. But I already taught you, because when I'm discussing, I felt it is important that you should understand the things now. That's why. And 1-2 points which are still pending in first chapter for me to talk. That's why. So you will revise from the notes what I did giving in the classroom. और जो हम क्लास में लिख रहे हैं वो ज्यादा ही रहेगा पर कम नहीं रहेगा मटेरियल से देखेंगे तो. Tomorrow we'll start using the materials and we'll solve some problems. Okay. Should I scroll it up? One student is asking me online, सर मेडिकल इंश्योरेंस आपने 40,000 पे करे तो 25,000 डिडक्शन मिला, बाकी 15 का क्या होगा? क्या होगा मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा, उतना ही हो गया ना? ओके. हो गया बेटा, कैन आई स्क्रॉल इट? If you still have any more doubts, you can ask. दोस्त लॉटरी पे डबल टैक्स तो नहीं है ना? सर ये टीडीएस वाला जो आप बताया है ना सर, इस पॉइंट को सर थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर दीजिए. कौन सा टीडीएस वाला? सैलरी वाला ये वाला? एम्प्लॉय का वो जो टीडीएस में से 10% वाला बताया था सर, वो थोड़ा सा क्लियर करिए. ये लिख लो पहले, फिर लिख करते हैं. दोस्त रिलेटिव में वाइफ का ब्रदर आएगा. बहुत प्यारे यार आपको. दोस्त होगा वाइफ का ब्रदर मतलब अच्छा बीवी होगा. अरे मेरे बाप क्या स्टेटमेंट था यार, मतलब हाइट्स हो गया इसका यार. शादी करने का, गिफ्ट लेने का, डिवोर्स देने का. अरे आप इनकम टैक्स के लिए डिवोर्स देंगे क्या यार शादी करके? ये सब अगर विनोद सर सुनेंगे ना, विनोद सर बोलेंगे शिवा क्या सिखा रहा है यार इनको, ये लोग मतलब 4 दिन में टैक्स का ऊपर नीचे कर दिया ऊपर. क्रेजीनेस हो गया यार ये. शादी करेगा फिर डिवोर्स दे. यस माय डियर. सॉरी देयर इज अ टैक्स सेविंग पॉलिसी. अरे बोलो बेटा. वो एग्जाम में यूज कर सकते हैं लाइक डिडक्शंस, मतलब फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक. preferably rightful. That acronyms is okay. IFHP, PGBP, capital gains is okay. IFO is also okay. But savings bank and all, you better rightful. I mean, I wrote shortcut, just used to it in the class, so just wrote shortcut. But in exam, rightful. फॉर्मेट सर ये फॉलो करेंगे. Format तो यही follow करना है. Format is this. Yes. फिर शादी करेंगे. सर एक बात बोलता जरूर, अब टैक्स के चक्कर में यार बीवी को डिवोर्स देंगे यार. नहीं पर वो जो बोला सही है एक्चुअली. रहते थोड़े लोग ऐसे, उनको हम बोलते हैं नमूने आइटम.
और मैं क्या बोलूं यार, नहीं पर है थोड़े लोग ऐसे जो करने वाले हैं, जिनका प्रॉपर्टी ज्यादा है, डिवोर्स लेते और दोनों को डिवाइड कर लेते और इनकम स्प्लिट कर लेते, बेटा तुम्हारे पास बेटी मेरे पास, उसको दे देते, मतलब वो टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ भी कर लेते यार कार्तिक। I'll give you one question after this. You guys have to solve, my dear friends. ठीक है, इतना हम बात करें तो I want perfection from you. So I want yes answer from you. Under section that is allowed. किधर लिखा मैंने? U by S ना? U slash S. You don't write never US. It has to be U slash S. That is always allowed. Under section. वो चलता है. What is allowed? दोस्त क्लियर है ना? And I want you guys to become very very fast in tax calculations. फटाफट खत्म करना है. 2.5 लाख तो जीरो है, 2.5 से 5 12,500 आएगा, 5 से 10 तो 1 लाख आएगा, उसके ऊपर से 30% निकालो. So become little quicker in tax, quick. So in this problem, if you understood, in this question we have learned 3 sections. 80C आ गया, 80D आया, 56 to 10 आया. 56 to 10 क्या है बेटा? Gift. I mean, I think we discussed a lot about gift. You'll not forget now. But there's a lot more to talk. We'll talk. Better done? Friends, are we done, my dear friends? Finished writing? Yeah. Friends, are we done? Chalo beta, I'll ask you one question, think properly and tell me now. Is it necessary? Whose responsibility is of TDS? Payer. It is whose responsibility to pay tax? Pay. And is it necessary that TDS rate, tax rate both are same? But both are same only in case of salary. That is the reason why practically salaried employee will not pay any tax from his pocket, because everything is already gone in the form of TDS. समझा क्या? यही बात सब तो वो जैसे अरे यार सिंपल सी बात है यार. देयर इज एन एम्प्लॉयर, देयर इज एन एम्प्लॉई. जब इसको सैलरी पे कर रहा है, अज्यूम करो सैलरी 10 लाख रुपए है और कुछ इनकम है नहीं साल का. यार मैं जब भी फिगर लिखूंगा साल का ही लिखूंगा, ठीक है? तो एम्प्लॉयर टीडीएस करेगा 1,12,500. इसको टैक्स कितना पे करना है? 1,12,500. तो टीडीएस इज सेम, टैक्स इज सेम, तो ये पॉकेट से फिर कुछ पे करेगा क्या? एग्जैक्टली, प्लस एचएससी ऑफ कोर्स, नो डाउट. बट टीडीएस रेट में एचएससी सिर्फ सैलरी में ऐड करते, बाकी किसी में ऐड नहीं करेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन एक्सपर्ट इज पेइंग मी 10 lakhs and doing 1 lakh TDS, they don't add HSC. In TDS never HSC is added except in case of
salary. The only reason why they have done like this, they don't want to trouble salaried employees. उसको जितना टैक्स पे करना है पूरा का पूरा टीडीएस में कट गया तो उसका काम खत्म हो गया ना यार, जेब से वापस कुछ बनने की जरूरत पड़ेगा उसको नहीं. That's the reason. समझा भी आपको? Yes. So are we clear with this whole story, my dear friends? I strongly believe that we got a good amount of clarity, my dear friends. Can I give you one question? Will you solve it now? Everybody? Can we learn 1-2 more sections and then start solving? Right. एक दो सेक्शन सुनते फिर सॉल्व करते. And that 1-2 section also we'll add in the problem. वैसे करेंगे ना यार, cumulative learning should happen, no friends. Sir, Shiva Teja, example only. I donated 1 lakh to BJP. Example. What is BJP? Artificial Judicial Person. अरे मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी. Correct, no? Kamal. Wonderful. So I donated 1 lakh to BJP. Who's happy? Modi ji is happy, of course, because we gave 1 lakh to Modi ji. अरे मैं 1 लाख लिखा वहां पे, बट लोग 1 CR, 10 CR, 100 CR, 1000 CR देने वाले भी है, जिनका पूरा कहानी बाहर आ रहा है अभी. So I donated 1 lakh to BJP. मैंने कुछ नेक काम किया क्या? इनकम टैक्स बोल रहा है आपने बहुत बड़ा नेक काम किया है, हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर वन सेक्शन कॉल्ड 80GGB or 80GGC. GGB is for any person other than company. GGC is for a company. But deduction is same. आप पूछ सकते हैं मेरे से, दो सेक्शन क्यों बनाए सर? फिर जब बनाए था तब बनाए थे तो वैसे ही रखे थे. मतलब एक्चुअली रीजन क्या था? There was once upon a time when 1961 Act was formed, only GGB was there, where it was allowed only to individual, telling that if you contribute to political party, whatever you contribute will give deduction. Then they wanted to add company in that. इनको लगा उसी में ऐड नहीं करते, अलग सेक्शन बनाते उनके लिए, हमारा सिर खाने के लिए. फिर बनाया एक और सेक्शन. Is getting clarity? So if individuals like us, we are donating to BJP, which section will come? 80GGB. If expert is donating, if Vinod Reddy sir is donating 10 lakhs from his pocket to BJP, I'm sure who are his foundation students understood the essence of my statement. अगर विनोद सर ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो हो गया फिर. Imagine Vinod sir, okay, let me come back. Vinod sir donated 10 lakh rupees to BJP from his own pocket. Will he get some deduction? Yes. Which section? 80GGB. Imagine Vinod sir did not donate from his pocket. He donated from the company's bank account. 80GGC. Deduction किसको मिलेगा? Company. And one line answer. In act they told entire amount, whatever you donate, deduction is allowed. मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्त सुन लेना, 10 लाख का सैलरी है, महीने का साल का? साल का. मैं कभी महीने की बात ही नहीं करता, साल का 10 लाख सैलरी है, और 10 लाख जैसा आया वो 10 लाख पूरा बीजेपी को दे दिया, मोदी जी के हाथ में रख दिया. एक्ट बोल रहा है नो टैक्स, एंजॉय. somebody is telling wow कितना अच्छा है सर, दे दो. और ऐसे थोड़ी यार टैक्स नहीं, मतलब जेब में से पूरा पैसा आज दे देंगे क्या पॉलिटिकल पार्टी को? एंड वन पॉइंट लेट मी टेल यू, दिस सेक्शन इज नॉट जस्ट फॉर बीजेपी. दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर डोनेशंस टू अ पॉलिटिकल पार्टी. इट कुड बी एनी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग शिवसेना पार्टी. वी डोंट नो हु इज द ओनर ऑफ दैट पार्टी आल्सो. अरे बहुत डेंजर है यार महाराष्ट्र, पता ही नहीं चलता कौन किस में है. नहीं, मैं आज वन टाइम विनोद सर दिस पर्सन इज इन विच पार्टी? शिवा सर पूछे कल, आज या परसों, किसकी बात कर रहे हैं आप? लिटरली ही टोल्ड मी दिस डायलॉग. आर यू आस्किंग अबाउट यस्टरडे और टुडे और टुमारो? ठीक है. एनीवेज, आर वी क्लियर विद दिस सर? One extra point to add is that they told very clearly in the law, no deduction is allowed if the amount is contributed by way of cash. If it is cash donation, deduction is not allowed. It should be other than cash. If it is cash, it's not accountable. You're getting what I'm saying, no? And whatever amount they contribute, entire amount deduction is allowed. 80 GGB is?
Sorry, I think I told reverse to you. 80 GGB is company to political party. GGC is other than company to political party. Sir, clear? Everybody, my dear friends. GGB is what? Company to political party. GGC is other than company to political party. Are we clear? Making sense? If we individual contribute, which section will come? 80 GGC. I think I told reverse in the starting. Yeah, GGB is what? Company to political party. GGC, other than company to political party. सबको clear है बेटा? Everybody, sir. Life insurance is covered in which section? 80C. Medical insurance? 80 TTA. Interest on savings bank account. Non-senior citizen. 80 TTB. Senior citizen. Interest on savings bank and fixed deposit. 80 GGB. Company to political party. GGC. Other than company to political party. Sir, clear hai? Everybody. The practical problem is nobody donates like this except big companies, stalwarts who have got some arrangements. They only do. Other people who will be interested donate political party like this. And they covered political party means every political party registered in India. In India, we have got one act called Representations of People Act. Under that act, political party is registered. Any political party which is registered. Clear? Yes, what's the doubt? Company will include partnership of workers. No. Yes, or please. No. Only company. Company means any company which is formed under this act or any other. बस समझ गए आप लोग? He raised hand once. That was your doubt. This is my answer. ठीक है? अरे दो बार बोला ना दोस्त वही. Any political party, even though which is not in power. Imagine we all together we formed one party. हाँ? किधर जाने का? अरे वी फॉर्म्ड वन पार्टी मतलब ये पार्टी नहीं मेरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं. किधर जाने का पूछ रहे हैं? ठीक है ना? डन. सर क्लियर? चलो. नोट नहीं, क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन लिख देते सीधा. चलो, ये सेक्शन लिखने का. प्लीज पुट साइड हेडिंग 80 GGB. GGB और 80 GGC दोनों एक साथ लिखते हैं. ठीक है ना बेटा? फर्स्ट पॉइंट 80 GGB allows deduction. 80 GGB allows deduction what beta? Deduction in respect of contributions given by company to political party. In respect of contributions given by company to political party or an electoral trust. Or an electoral what beta? Trust. It's basically a trust to form a political party. They take all money into the trust, then they pump it to political party whenever required. Getting it? Speak out, my dear friends. Next point. Section 80 GGC. Section 80 GGC allows deduction in case of contribution
to political party or electoral trust. Political party or electoral trust. Electoral trust. Correct. No common sense, other than company only. Electoral trust. Full stop. However, it is not allowed. However, it is not allowed in case of. It is not allowed in case of. It is not allowed in case of local authority. In case of local authority and AJP wholly or partly. AJP wholly or partly funded by the government. Local authority and AJP wholly or partly funded by what, sir? Government. Logic is very clear. Government ने पैसा दिया AJP को और वो पैसा AJP ने political party को दे रहा है. Indirectly looting only, no? So getting my point? Government has given fund to AJP. AJP is given to political party. Is it not indirectly looting the money? Friends, speak out. Very good. Write one note. Last. No deduction under section 80 GGB, under section 80 GGB or GGC. No deduction under section 80 GGB or GGC is allowed. If the amount is contributed by way of what, beta? Cash. If the amount is contributed by way of cash. That's it. Getting clarity, everybody? Beta bolo. Does this point make sense for all of us, guys? Everybody, my dear friends. So what is 80 GGB? Companies to political party. GGC, other than company to political party. Whatever you donate, entire amount reduction will come. 100% reduction will come. But if you contribute by cash, 1 rupee also is not allowed. And they only told in the law political party. They never told a ruling political party. Yes, sir. समझ गए ना बेटा आप लोग? Everybody, sir? Good. बोलो बेटा. The? They have to pay the tax for. Who, political party? No, they won't pay tax. The political party is also a tremendous tax planning. Let me tell you honestly. That is, whatever contributions or donations received by political party is completely tax free for political party. They'll not pay any tax. But they told one point in the law. Political party should prepare the list of all the donors who have given more than 20,000 and submit the list to income tax department. समझ गए लॉजिक क्या है? उसको पूछेंगे भैया कहां से आया करोड़ रुपए देने के लिए, बता. नहीं बताएगा. अनएक्सप्लेन्ड इनकम 78%. ओपा में लिख लेते हम लोग, पढ़े ना हम लोग. बोलना हो गया ना. उनको तो टैक्स नहीं लगता. अरे बिल्कुल नहीं यार. पॉलिटिकल पार्टी मतलब आजकल जिसको ज्यादा पैसा हो गया पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं. कैन वी प्रोसीड? कौन कौन? कर सकते हैं. आप कर सकते हैं सर. हो जाएगा. कुछ नहीं. क्या हो भाई? लोकल अथॉरिटी कौन है पूछ रहा है क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाई. अरे उनके पास पैसा किधर से आया? गवर्नमेंट से पैसा आया. वो तुम पॉलिटिकल पार्टी ले लेंगे क्या? ऐसा थोड़ी होगा. मतलब ऐसा हो गया सरकार के पास जो पैसा है वो लोकल अथॉरिटी ले रहा है, वापस बीजेपी को दे रहा है. मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? सरकार का पैसा बीजेपी उठा रहे.
बच्चे बोल रहे इनडायरेक्टली क्या है सर, डायरेक्टली वही हो रहा है। ठीक है दोस्त, क्लियर है ना? डिडक्शन मतलब 80 जीजीसी में हमने लिखा है ना 80 ये मतलब अदर देन कंपनी। हाँ है ना, पर लोकल अथॉरिटी को एजेपी को नहीं मिलेगा, लोकल अथॉरिटी और एजेपी को भी मिलेगा। नहीं मिलेगा, वही तो लिखे ना, अरे नॉट अलाउड लिखे ना हम लोग। पढ़ो लाइन एक बार, जस्ट रीड आउट दैट लाइन, व्हाट डिड आई से? हाउएवर इट इज नॉट अलाउड ही लिखे ना, अरे अंडरलाइन करना दोस्त, नॉट अलाउड। चलो हो गया दोस्तों, अरे बोलना बेटा। चलो व्हाट इज सेक्शन 87A? अरे बोलो भाई। रिबेट 288A, 288B, 115BB, casual incomes 56 to 10, gift 80C covers which point? लाइफ इंश्योरेंस, एक तो पता है अपने को 80D कवर्स ओनली 1 पॉइंट। 80D का लिमिट कितना है? सीनियर है तो 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना है? मतलब लाइफ इंश्योरेंस का 1.5 लाख है, 80C का पूरा मिलके 1.5 लाख है। 80C का डी का दोनों मिलकर 1.5 है क्या? सिर्फ 80C का 1.5 है। दोस्तों समझ में आया बेटा? वंडरफुल। देन व्हाट इज आंसर फॉर 80TTA? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर नॉन सीनियर। कितना डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन 10,000 whichever is lower. 80TTB, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन। कितना डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन 50,000 whichever is lower. Next 80GGB, कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल याद रख लो बेटा, सिंपल। 80GGB कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। GGC अदर देन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। आपको एक बात बोलूं क्या, वी हैव एन चैप्टर कॉल्ड डिडक्शंस, एक अलग चैप्टर है मिडल में, ठीक है? इसमें नहीं है, मॉड्यूल 2 में रहेगा। आपको मॉड्यूल 1 ओनली इज व्हाट यू गॉट, मॉड्यूल 2 यू विल गेट। अलग चैप्टर है डिडक्शन, उसमें एक 15-20 सेक्शन है, उसमें एक 4-5 सेक्शन ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यू हैव टू रियलाइज दैट लॉट ऑफ डेप्थ इज गोइंग ऑन in the first chapter, which you have to understand that. Are we clear? Everybody friends? What is section 172? Shipping business of non-resident. मैं एक बार जब 172 में गया, स्टूडेंट के दिमाग में 172, 174, 174, 175, 176. And the moment after 172, if I take you to 288A, फिर इधर वापस नहीं आ रहे सर, 288B राउंडिंग ऑफ, वो भी पूछ लो, हम वेट कर रहे, खत्म करेंगे सर उसको भी, फिर जाएंगे उधर। इट्स अ पैटर्न में। सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 3, सेक्शन 2, डेफिनेशंस। स्टूडेंट इज टेलिंग, बोले नहीं सर आप कभी? अरे नहीं बोलने का क्या है यार। 27, 234 प्रीवियस ईयर। ये पर्सन बोल रहा था, ऐसा शिफ्ट हो गया पर प्रीवियस ईयर, ऐसा क्या वो पर प्रीवियस ईयर। गुड। 87A, 288B, BB, A, 87A, 115BB, casual income. Correct, no? 80TTA, interest on savings bank account for non-senior citizen. 80GGA, अभी तक पढ़ा नहीं, पढ़ाऊंगा, रिलैक्स, कंट्रोल। समाटेल पॉलिटिकल पार्टी, हाँ नो नो नो। जीजीए पढ़ना बाकी, पढ़ेंगे हम लोग, वो सेक्शन तो है, जीजीए सेक्शन तो है, पढ़ेंगे पर। 80GGC अदर देन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी भाई। जीजीबी कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, पहले कंपनी आया फिर अदर देन कंपनी आया, क्लियर है ना? टीटीबी क्या है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन। बराबर है ना बेटा? 27, wow, 176 discontinued business. Some people brain ऐसा इधर से 170 बोलते ऊपर गया, शिपिंग बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ऐसा स्कैन हो रहा है बस ब्रेन में ऐसा। गुड, डोंट वरी, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। 3-4 डेज में हम लोग ऐसे है तो एक हफ्ते में 1 वीक 10 डेज में पूरा चेंज हो जाएंगे एकदम, विल बिकम मास्टर्स इन सेक्शंस, डोंट वरी। आर वी क्लियर सो फॉर एवरीवन? पक्का बेटा, समझ में आया आपको? 56 to 10, ये तो आप लोग भूलेंगे नहीं, इतना बात करें आज गिफ्ट के बारे में, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ये हद तक चले गए कि डाइवर्स भी देंगे, शादी भी करेंगे, ये लेवल तक पहुंच गए हम लोग।
ठीक है. Okay, take a short break. After break, we'll talk more. Thank you. After break, we are going to solve a beautiful problem. So we'll do a beautiful question. Thank you. टाइम बहुत जल्दी निकल गया आज, मालूम ही नहीं पड़ा. हाँ, गिफ्ट के चक्कर में बराबर है. पर अच्छा हुआ सब पार्टिसिपेट किए, मजा आया मुझे. ये माइक अच्छा है.
Shall we start? Chalo, get back, my dear friends. Come on. So, friends, are we clear with the example what we discussed and the problem what we solved, my dear friends? Yes. So, guys, what is section 87A, by the way? What is 80TTA? Interest on savings bank account for non-senior citizen. TTB, interest on savings bank account and fixed deposit in case of senior citizen. And 80TTA deduction is interest on 10,000 whichever is lower. TTB is interest on 50,000 whichever is lower. 80GGB, company to political party. GGC, other than company to political party. Clear hai na beta abhi tak? Section 14, heads of income. Clear? 115BB, cash and incomes. Good. What is the last point we wrote? No deduction is allowed. That point is over, no? Yeah. Please put side heading section 115 BBE. क्वेश्चन ना इसके बाद करेंगे, याद है मुझे. आई नॉट फॉरगेट. BBE. 115 BBE. Right below. In the following cases, comma, tax is at the rate of tax is at the rate of 60%. Tax is at the rate of what, beta? 60% plus surcharge at the rate of 25% plus HEC at the rate of 4%. Tax at the rate of 60%, flat 60%. We'll write what are those unexplained income, unexplained investment. मतलब पैसा आया पर बता नहीं पा रहे आप किधर से आया. बताओ भाई, वरना 60% टैक्स पे करो. ठीक है ना? 60% plus surcharge 25%. I know your question. Surcharge 25% plus cess 4%. Clear है ना बेटा? Hold on, don't write 1 minute. Bracket we will write like this. First listen, then we'll write. Effective rate is 78%. And how that 78 has come is this 25% is on tax. आपका doubt वही है ना? That is answer. 20% is on tax. Please do 25% on 60%. इतना सोच रहे 15% है मेरे भाई. 60 plus 15 is what? 75. 75 into 4%. 3. साइलेंस क्यों है? समझ में आ गया आप लोगों को? सरचार्ज इज ऑलवेज ऑन व्हाट? टैक्स, नॉट ऑन इनकम. सर आप टोटल ये मत करो. सर 60 plus 25 is 85. 85 plus 4 89. 89%. माय गॉड. सर 25% is on what? Tax. 4% is on tax plus surcharge. I'll make you write that point also. Which we'll write is surcharge is always on tax. HEC is on tax plus surcharge. समझे क्या आप? Surcharge is on tax. Surcharge is something like extra tax collected. Surcharge is on tax. HEC is on tax plus surcharge. समझ में आ रहा है बेटा? Read out that line what we wrote. In the following cases, tax is at the rate of 60% plus surcharge at the rate of 25% plus HEC at the rate of 4%. Bracket right. Effective rate is 78%. Effective rate is 78% since effective rate is 78%. Effective rate is 78% since surcharge is a percentage of tax. समझ में आ रहा है बेटा? Since surcharge is a percentage of tax and HEC is a percentage of
and HEC is a percentage of tax plus surcharge. HEC is a percentage of tax plus surcharge. I think your question is answered, my dear friend. Done. So are we clear with this point, everybody? Now what are those cases? We'll write. Number 1. Number 1. Unexplained. What is that word, sir? Unexplained cash credits. That means in the money, bank account money has come. Or suddenly in the books, income has come. From where it has come, you tell. From where from that cash has come. Got it, no? Unexplained cash credit. Bracket, section 68. Bracket section what beta? 68. Next. Number 2. Section 68. Number 2. Unexplained investments. Unexplained what beta? Investments. Example of this point is what you know. Income tax department has done income tax raid and suddenly they found gold, jewelry, everything. Officer is asking, where from you got it? He is telling, this gold, 60%. समझ में आ रहा है क्या? Ultimately, whatever investments you have got, you would explain the source of it. If you don't explain, then the section will come. This section will come only in the source is not explained. समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या लिखा आप second? Unexplained investments. Section 69. Bracket section 69. Number 3. Unexplained money. Unexplained what beta? Money. Bracket section 69A. A is capital A. Section 69A. Clear? Next point. Investments. Investments not fully disclosed. Investments not fully disclosed. Investments not fully disclosed in the books of account. Investments not fully disclosed in the books of account. Investments not fully disclosed in the books of account. इसका मीनिंग समझ गए क्या? Investment value is 10 crores, but in the books of accounts you are showing only at 2 crores. Clear है? Yes. Investment not fully recorded in the books of account. Bracket section 69B. 69B. Next point. Listen, no, one second. I have seen this next point practically. These cases we don't get to see practically that much because some explanation will be ready with. Correct? No. So we're all smart people. Friends. Yes. You are caught with someone. Then somebody is asking what is going on here. Then you will tell no, your talent. We came only for eating. Correct? Wonderful. Chalo. Proceed. Listen first. The next point is my reference which I have practically seen is, listen carefully sir. That is, one of my client is basically an individual. What happens is when they prepare their P&L account, they will show all the expenditures, whatever they want to show. Some of them are genuine, some are not genuine. One fellow, what he has done is, in the P&L account, he has shown 2 petrol expense, 2 diesel expense. Both. And in the balance sheet, only 2 bikes are there. Car nahi hai balance sheet mein. मतलब balance sheet में सिर्फ बाइक है. बाइक में तो दोनों डाल के चला रखा है, दोनों मिक्स कर रखे गाड़ी में. Officer asked, for what purpose both petrol and diesel are incurred? When you have got only 2 bikes, that bike you will use petrol, what purpose diesel is incurred? Then this fellow told, I brought one generator on rent, for the generator I use diesel. Then officer asked, where is generator rental charges in P&L account? Then this fellow told, मेरा दोस्त से लेके आया, उसका पैन दो. अरे समझ में आ रहा है क्या? The day when they catch, stars. Chintak only.
Sir, clear everybody? That's it. What you wrote? That is fine. That is time pass point. Next point. Unexplained expenditure. This is very, very common. Lot of people write whatever they want. I saw one fellow, he has put Diwali sweets 10 lakhs. अरे इतना क्या खाता रे स्वीट्स 10 लाख रुपए स्वीट हाँ अरे बाटा ठीक है समझ सकते हैं यार बाटे तो भी 10 लाख का स्वीट मिठाई थोड़ी बांटते यार उसका टर्नओवर है 2 करोड़ उसका टर्नओवर है 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिठाई दिखा रहा है फिर मैं उसको क्या बोला वो तो बोगस है खर्चा क्या 50,000 मैं उसको 50,000 देके 10,000 थोड़ी दिखाएंगे सर ज्यादा हो गया सर ठीक है 5 लाख दिखा देंगे अरे वैसा रहते लोग मतलब कुछ भी दिखा देते एक्सपेंस प्रॉफिट कम करने के लिए समझ में आ रहा है क्या आपको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर ब्रैकेट सेक्शन 69 सी एक्सेप्ट मिस्टेक मतलब ओ वंडरफुल गुड क्वेश्चन मैडम इज आस्किंग वन क्वेश्चन सर 60% टैक्स पे करने से अच्छा मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते कि एक्सप्लेन कर देते ये कहां से आया करेक्ट नो then that is called under reporting misreporting of income and penalty is 200% of tax payable. There is one section in CA final section 270 capital A which says in case of under reporting or misreporting of income penalty is 200% of tax. मैडम बोल रहे हम नहीं बोलेंगे सर कुछ यही अच्छा है उससे तो यही बेटर है ना उस केस में क्या होता बोलू जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा आपका टैक्स बनेगा आप लास्ट में क्या बोलेंगे बोलू ये भी बोलेंगे लास्ट में यू एंड ऑफ द डे यू टेल सर एक काम करते मैं कुछ भी पे नहीं करता जो मिला आप लेके जाओ दैट सिचुएशन विल कम 200% टैक्स किसको बोलते मैडम करेक्ट नो 30% इज टैक्स उसका 200% कितना हो गया 60% 60 प्लस 30 बिकेम 90 सेस छोड़ दो सेस में कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हो इधर समझ में आ रहा है आपको मैडम क्लियर है कन्विंस हो गए ना डन प्रोसीड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर सेक्शन 69 सी लास्ट पॉइंट एंड लेट मी टेल यू वन पॉइंट दिस 68 69 69 A B C need not remember but you have to remember 115 BBE so basically in simple terms to say 115 BBE deals with unexplained incomes unexplained investment unexplained expenditure in all these cases tax rate कितना है 60% surcharge cess effective rate who don't know anything they will write effective rate 89% bracket computation they will show 60 plus 29 plus 4 ठीक है ना मैडम I think you got right answer done are we clear last point in this कितने 5 हो गए शायद ना last point amount borrowed amount what sir borrowed that means taken loan amount borrowed or repaid amount borrowed or repaid amount borrowed or repaid on hundi amount borrowed or repaid on what beta hundi amount borrowed or repaid on hundi I'll complete then I'll explain amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account payee check amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account payee check so getting clarity everybody come on repeat that line last line amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account payee check let me explain that to you clearly listen carefully what is that word we used amount what sir borrowed that means what taken on loan or we repaid the loan amount borrowed or repaid on what beta hundi hundi means not your temple hundi from temple hundi you will not borrow and repay no this hundi is basically a bills of exchange bill of exchange word suni foundation mein
A bill of exchange which is drawn in local language is called hundi. Something like a promissory note. Sir, कभी लोन ले तो promissory note लिखाते ना sir? We get it written, no promissory note. A bill of exchange which is drawn in local language is called hundi. Getting clarity? Friends, come on, read out that word. Amount borrowed or repaid on what? Hundi. Otherwise than through account pay check. Means government is telling boss, you please borrow and repay only by account pay check. If you borrow by other than account pay check, we will tax you. That too 60%. Now I have a question. Think properly and you tell me the answer. That is, there is something called Direct check. Cross check. ये तीनों में कुछ फर्क है क्या? Yes, sir. Who will tell? बोलो बेटा. ये cross check मतलब जिसने भी डिपॉजिट किया ना उसको कैश मिलेगा. कैश मिलेगा? No man, wrong answer. सर जो बिल करता है वही उसी को पेमेंट करता है. Correct. Simple answer. Bearer check is that check where you can take it to the bank and you can take the cash against that check. Your name is written. Bearer name only says you are the bearer of that check. Sir, currency note पे भी लिखा रहता नीचे. I promise to pay the bearer a sum of 500 rupees. Correct, no? Bearer check is where you can take the cash from the bank. Cross check, account pay check क्या है? मैं बोलूँगा सुनो बेटा. ध्यान से सुनो. And people say cross check is drawing two lines. Account pay check is in between. We'll write account pay. बराबर है. दिखने में सही है, but फर्क क्या है? Listen very clearly. If I give you an account pay check, imagine I gave an account pay check, let's say to Karthik. When I give an account pay check to Karthik, what happens is that money will go from my bank account to his bank account. Money will go from my bank account to his bank account. Are we getting clarity? Speak out, everyone. But imagine I gave 1 lakh rupees check to Karthik because I had to pay 1 lakh to Karthik, but Karthik had to pay 1 lakh rupees to Tejas. Karthik had to pay 1 lakh rupees to Tejas. Now what Karthik can do is, he can turn the check backside and he can write the word endorsed to Tejas. Suniye word endorsed. Endorsed to Tejas. So what point you have to understand very clearly is that cross check can be endorsed, but account pay check cannot be endorsed. And government wants to promote account pay check. Account pay check है तो visibility है. मैं अगर कार्तिक को account pay check दिया 100% वो पैसे कार्तिक के अकाउंट में ही जाएगा. अगर मैं कैश दिया ये कैश उठा के जाएगा बैंक से, मालूम नहीं पड़ेगा. अगर मैं क्रॉस चेक दिया ये किसी को ट्रांसफर करेगा, मालूम नहीं पड़ेगा. तो गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज विद चेक. नाउ रीड द लाइन. Amount borrowed or repaid on what? Hundi. Otherwise than through. That means if you do by account pay check, no problem. सर आप इंग्लिश समझ गए ना बेटा? जो मन में आए एग्जाम में लिख नहीं सकते बेटा. अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू राइट एग्जाम इन इंग्लिश ओनली. सो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. व्हाट इज दैट लाइन? अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक. मतलब अकाउंट पे चेक से दिया तो प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. क्लियर? वापस रीड दैट लाइन. Amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account paid check. That's it. Bracket section 69 D. Is that clear? Which section all this? 115 PBE. Are we clear? Fully, my dear friends? Totally, sir? So if I ask you 115 BB में क्या covered है, क्या बोलेंगे? Unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure, amount borrowed by other than account pay check. मतलब ये सब नाटक आप करेंगे तो भाई खत्म. Tax is at the flat rate of 60% plus surcharge plus S effective rate 78%. Are we clear? Everybody? So what is section 115 BB beta? Casual income. Casual incomes. BBE. Unexplained incomes. 87A. 115 BB. BBE. Unexplained income, unexplained investments, unexplained expenditure. Explain करना मेरे भाई. नहीं बताए तो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं बताएगा तो तू टैक्स भर के जा.
तो बराबर है ना? कुछ गलत है क्या सेक्शन में ये? अरे बिल्कुल सही है यार, कुछ भी गलत नहीं है, बताओ यार हमको. आर वी क्लियर विद दिस? एवरीबॉडी सर? एवरीवन? गुड. आई विल गिव अ क्वेश्चन प्लीज. मिस्टर राहुल, राहुल पता है ना आपको? नाम तो वंडरफुल, राइट. मिस्टर राहुल provides the details of his Mr. Rahul provides the details. I will not write. देखे क्या कॉपी करेंगे, लिखो यार, बोल रहा ना, ठीक है ना? आदत नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज का ऐसा. मिस्टर राहुल provides the details of his income and also investments made during previous year 22-23. कैसा लिखेंगे आप? during PY 22-23. बराबर है ना? during PY 22-23. during PY 22-23. and request not me, you, and request you to compute his tax liability. And request you to compute his tax liability. And request you to compute his tax liability for assessment year. बोलो बेटा. 23-24. AY के बाद डैश रखने की जरूरत नहीं है. It has to be AY 23-24. Some are writing like this. Okay. Please. AY 23-24. Full stop. Rahul age is 29. Young chap. Right below. Income from salaries. 8 lakhs. Bracket TDS 1 lakh. ठीक है ना? मतलब उसका इनकम 9 लाख से क्या? 8 लाख से है, पर उसको हाथ में आया होगा पक्का 7 लाख ओनली. करेक्ट है, समझ गए ना? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4 lakhs. PGBP 10 lakhs. TDS 1 lakh. ठीक है ना? नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स 0. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट एडमिशन इशू हो गया, क्लास के बाद कर लेते. केयरफुल. अरे क्लास के बाद कर लेते थे बेटा एडमिशन का काम. चलो कंटिन्यू. क्या लिखे आप? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट 9,000. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट 9,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन FD 60,000. कितना बेटा? 60,000. ब्रैकेट TDS 6,000. TDS कितना बेटा? 6,000. ठीक है ना? नेक्स्ट, winnings from horse race 3 lakh. ब्रैकेट TDS बोलो. कार्तिक वन कैलकुलेटर फॉर दैट. 90,000. TDS 90,000. बेटा समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी?
gift from father 1 lakh. Gift from father 1 lakh. Gift from best friend BFF, best friend forever, बराबर ना? Gift from best friend. $40,000. Gift from friend कितना बेटा? 40,000. That's it. Next line. Rahul paid oh man, I was about to tell tuition fee for children. इसका एज कितना बोला मैं? ठीक है छोड़ दो. राहुल पेड लाइफ इंश्योरेंस तो भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है उसमें. राहुल पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम of 1,20,000 1,20,000 and tuition fees and wait. You wrote that word tuition? Yes. आधा लिखा है, इग्नोर करो. And school fees. अरे ट्यूशन फीस फॉर स्कूल लिखना भाई, क्या है उसमें? एंड स्कूल फीस ऑफ हिज सन, ठीक है, ऑफ हिज सन 70,000. बेटा बोलो मुझे लाइफ इंश्योरेंस कहाँ पे कवर्ड है? ATC. बच्चे का ट्यूशन फीस ATC 1,50,000. याद है ना? बराबर करना. एंड ट्यूशन फीस इसका अलाउड ओनली फॉर फुल टाइम एजुकेशन. बताया था आपको मैंने, ये प्राइवेट कोचिंग का नहीं मिलेगा, फुल टाइम एजुकेशन का ही मिलेगा. हाँ 190 को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 150 तक. अरे वही तो क्वेश्चन पूछ रहे वापस. बाकी का डिडक्शन नहीं आएगा, मतलब बेनिफिट नहीं मिला. अरे बचा हुआ अमाउंट का मतलब बेनिफिट नहीं मिला. अरे मैं कल नेकलेस लिया था मेरी वाइफ के लिए, वो एग्जाम्पल में. अरे याद है ना यार, 5 लाख रुपीस का नेकलेस लिया था वाइफ के लिए, कुछ बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स का? जो मिल रहा है वो ले लो यार. ऑलरेडी बताया मैंने आपको, जितना मिलेगा उतना ही खुश. सम स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम. मैंने बोला क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? रुकना मेरे भाई. स्कूल फीस कितना बचेगा? 70,000. कुछ गड़बड़ है? 70,000 70. लास्ट बैच एक बार ऐसे हुआ, 70 बोलते बच्चा 17 लिखा, फिर बोला सर आप ठीक नहीं, ठीक से नहीं बोले, मुझे 17 सुनाई दिया. 70. He also paid medical insurance premium. He also paid medical insurance premium of 26,000. Of 26,000 for himself. खुद के लिए. किसके लिए? Wonderful. 26,000 for himself. Next point. He donated 1 lakh to BJP. He donated 1 lakh to BJP by way of online transfer. He donated 1 lakh to BJP by way of online transfer. Full stop. He also donated 1 lakh to BJP by online transfer. Full stop. He also donated 10,000 to Aam Aadmi Party. You know Aam Aadmi Party, no? Jado पहुंचेगा. He also donated 10,000 to Aam Aadmi Party by way of cash. Smart. समझ गए आप लोग मुझे?
सर सब एंगल से कवर कर देंगे क्वेश्चन को. गुड. ऑल एंगल्स यू हैव टू कवर द क्वेश्चन, देन ओनली परफेक्शन विल कम. क्लियर है ना? बोले बाद में. कैश में फर्क क्या है पूछ रहे क्या? एडजस्टमेंट में क्या आएगा मैं नहीं बोलूंगा. नहीं, देख लो, बताया मैंने ऑलरेडी. चेक करके सॉल्व करना. हो गया क्वेश्चन. स्टार्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कम ऑन, डू इट. I want the final answer of net tax payable or net tax refundable. वो मुझे बताओ. 10,000 की लिमिट भी सब हो जाती है सर कि वो चेक से वो कैश. पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है वो. पॉलिटिकल पार्टी का 1 रुपया भी कैश नहीं चलेगा. नॉर्मली है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है. Come on guys, how much time you want? 5 minutes? ठीक है, चालू कर, कोई बात नहीं, ऐसा देख मत. Come on, do it. एटी जीजी बी आएगा, जीजी सी आएगा. जीजी गुड. Check. Yeah. Doing it, my dear friends? Are you done till total income? कितना है बेटा टोटल इनकम? 22-24. टोटल इनकम का मतलब क्या है बेटा? 22-94.
डिडक्ट क्या करने का बेटा उसमें? So what do you do with gift from father? Don't deduct anything. It's not taxable. If it's not taxable means don't take it to the income. Deduct करने का क्या रहता है उसमें? ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा ही नहीं वो, बराबर है ना? नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, 50,000 के नीचे वो। आपने क्या सोचा, पहले आर करके माइनस करेंगे क्या? अरे माइनस क्या करेंगे, सिर्फ डिडक्शन से माइनस करेंगे ना, उसका कोई सेक्शन नंबर में बोला क्या आपको? गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड वो सब माइनस करेंगे, किधर बोला मैंने ऐसा? अदर्स उसमें लेने का, अदर्स में लेके अमाउंट कॉलम में 0 दिखाने का। अरे यार ठीक है, सैलरी कितना है बेटो बोलो? एक सेकंड रुक जाओ सब लोग, 2 मिनट, टोटल इनकम तक निकाल देते हैं, फिर बाकी आप कंटिन्यू कर लो। हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 4 लाख। पीजीबीपी कितना है बेटा? 10 लाख। कोई नहीं लिखेगा, 2 मिनट रुक जाओ बेटा प्लीज। कैपिटल गेन 0 छोड़ दो उसको। आईएफओएस क्या क्या है आईएफओएस में? सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कितना है? 9,000। और क्या है बेटा? एफडी इंटरेस्ट कितना है? 60,000। और क्या है? हॉर्स रेस विनिंग्स कितना है? 3 लाख। फिर गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम फादर ब्रैकेट नॉट टैक्सेबल, अमाउंट कॉलम 0। नेक्स्ट गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, अमाउंट कॉलम 0, नॉट टैक्सेबल सिंस लेस देन 50,000। समझ में आ रहा है क्या? और बाहर हम कितना लेंगे बेटा? 3 लाख। दैट्स इट। समझ में आ रहा है बेटा कैसे करने का? If friend would have been 60,000, क्या होता था? फादर तो नॉट टैक्स वैसे लेता था, बट फ्रेंड का 60,000 हम टैक्स करते थे। बेटा समझ